Guys, let me check the microphone real quick. Right, so I believe the microphone is working, the game sound is working well. So let's begin. Welcome to the stream, guys. We are playing Nioh 3. We have, I guess, around given 30 hours we are into this game, and but I still believe we have only completed around 30% of the game, given the fact I was reading somewhere that there are around 42 in totality. There are around 42 main bosses, formidable enemies, masters and all, and I believe we are oddly in that 35. Give me a second. This guy, he's a crazy guy. He throws. He's not letting me touch my gravestone. Huh. Okay, cool. So I just believe that we are still around the 30-40% mark. Although completing all the formidable enemies and masters is not necessary. This game could have been completed pretty early. But still, we will be taking care of each and every main boss. Of course, that needs to be done, and the formidable enemies, the masters, the optional bosses, whosoever there are. भाई ये तो रुकता ही नहीं है. This guy is a crazy fellow. अरे how he is like one crazy. Let me heal. Let me get some cover, bro. We are in a crucible. इसीलिए अपन को जो भी damage होगा, in our next run, that damage will be reflecting in our health. What's that? अरे भाई ये क्या है ये? पता नहीं कैसा टाइप का एनिमी है ये. Nevertheless, we'll come back. And also, I was actually trying कि मैं इसको कहीं ना कहीं vertical stream करूँ, but for some odd reason my vertical stream is, don't know why, it's stuttering a lot. Vertical stream करने का मेरा मन बहुत ज़्यादा है, but कल भी मैंने try किया था, but yesterday also I was facing this issue of stream stuttering. भाई ये तो अद्धा फेंक के मेरा दिमाग ख़राब कर दे रहा है भाई. वो इतना अद्धा फेंक रहा है वो, किसी को भी नहीं लगा. देखो मर जा. मरा क्या सली ये डिस्कस. I'm on fire basically. I'm on fire. एक काम करते हैं, इसको निपटाए आते हैं. ये जो अद्दा फेंक रहा है ना, रुको साला दिमाग खराब किया हुआ तब से मेरा. नहीं अच्छा नहीं, दिस एरिया कैन नॉट बी एक्सेस्ड एज ऑफ नाउ. भाई गलती हो गई. इतना अच्छा टारगेट कैसे है उसका भाई. I'm running around and still. अच्छा I get it. To reach him, I'll have to go from this place. Maybe. Or maybe not. Maybe yes. This is the place, right? This guy. इसके बाद धीरे धीरे चलते हैं. ये strong guy. Ah, nice.
मर जा, मर जा. He's dead. Strong guy, but still not strong as our guy right here. What's up, Sarah Chan? Welcome to the stream. What's up with you? क्या चल रहा है? Is there something? हाँ, there is something. अरे dude, ठीक है. मुझे लगा कि भाई अपन स्वाहा होने वाले हैं. All right, this big guy right here. Nice. Missed it. बढ़िया. मजा. Reminds me of Yobu from Sekiro. Abhi we took care of a boss like him only. Just like Yobu. I have an exam on Monday. Currently starting introduction to 3D. What about you? This exam is related to what, Sarah Chan? I तो मतलब अपने लाइफ के मेरे को जो academic exams देने थे, that I'm done with, bro. जो ओहो, ज़बरदस्ती पड़ी लकड़ी लेने वाली बात है ना. इजी लाइफ इजी क्यों चलेगी सोल्स लाइक गेम्स में. आई तो हैव जस्ट बीन मैथमेटिक्स क्लास 11th. अच्छा, यू आर इन क्लास 11th. अच्छा. क्लास 11th तो आई बिलीव व्हेन आई वाज इन क्लास 11th. आई वाज इन क्लास 11th back in 2009. So I guess you can understand from that one particular thing. Back in 2009 I was in class 11 studying mathematics and introduction to 3D. कहीं ना कहीं I remember थोड़ा बहुत introduction to 3D. Exactly याद नहीं है although. Alright, so one good thing is that we have taken care of that big enemy right there. Now no one will be hurling those boulders at us. Status confirmed. हाँ भाई, of course. इतने पुराना आदमी हूँ यार मैं काफ़ी ज़्यादा. तो वही तो बात है ना. वही तो मैं कहूँ कि मतलब ये इंट्रोडक्शन टू 3D जो लग रहा है, मेरे को लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं दिस इज वही पुराना. भाई हाँ ठीक है. भाई डेविस्टेटिंग डैमेज देते हैं भाई ये. Nioh 3 इज एक्चुअली प्रीटी गुड. मतलब आई एम हैविंग फन. कभी डियाब्लो इमॉर्टल खेला है मोबाइल पे? अगर खेला है तो मतलब यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मेरा इसमें रेफरेंस क्या है इसके अंदर. पॉइंट है कि मैंने डियाब्लो इमॉर्टल खेला था कोविड के टाइम पे फ़ोन में. मतलब ऐसे बेसिकली है क्या, वो ग्राइंडिंग बेस्ड गेम है. एंड डियाब्लो जो है, डियाब्लो का एक काफ़ी एडवांस्ड वर्जन है. मतलब इट्स लाइक कि स्टोरी वोरी तो सब ऐसी है, म्यूज़िक सब फर्जी है, मतलब बहुत फर्जी टाइप्स का है. बट द कॉम्बैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़. तो ये डियाब्लो खेला है ना, तो ये बेसिकली एक ऐसा डियाब्लो है जिसके अंदर सोल्स लाइक एलिमेंट्स डाल दिए हैं बहुत सारे. क्योंकि देखो जो लूट वगैरह मिलती है, जिस तरीके से जो लूट स्पॉन होती है, द म्यूज़िक एवरीथिंग इज़ रिलेटेड कहीं ना कहीं टू डियाब्लो टाइप्स का ही, मतलब वैसा ही एक एम्बियंस है. बट इट्स जस्ट दैट कि कॉम्बैट इज़ टफ. बिकॉज कॉम्बैट टफ क्यों है? नॉट बिकॉज कि मतलब बॉसेस बहुत टफ हैं, बॉसेस इरिटेटिंग है नो डाउट, लेकिन पॉइंट ये है कि मतलब पैरी करने में मज़ा बहुत आता है इसके अंदर. पैरी और बर्स्ट काउंटर्स दोनों इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हुए हैं. जनरली सोल्स लाइक्स में क्या होता है कि ईदर दे विल बी अ डिफ्लेक्ट, या उसके अंदर पैरी होगा, या उसके अंदर बर्स्ट काउंटर होगा. तो इसमें क्या है, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स डाल रखे हैं इन्होंने. मैंने नियो इससे पहले कोई भी नहीं खेला. दिस इज़ द फर्स्ट वन विच आई एम एक्चुअली ट्राइंग. अरे पीछे आ जाओ. Oh, they have been taken care of, right? But there might be something right besides this area.
तो गेम इज़ फन, स्टोरी इज़ शिट, म्यूज़िक इज़ प्रिटी शिट. कहीं पर भी इन्होंने म्यूज़िक में कुछ काम नहीं किया. द ओनली थिंग दीज गाइज हैव वर्कड अपॉन इज़ टू एक सिमुलेट एन ओपन वर्ल्ड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, एंड उसके अंदर बहुत सारे साइड मिशंस हैं. साइड मिशंस जो हैं थोड़े से रेपिटेटिव हैं. द ओनली गुड थिंग इज़ कि यू हैव हेल नंबर ऑफ वेपन्स, यू कैन हैव व्हाटसोएवर काइंड ऑफ प्ले स्टाइल यू वांट. वेपन्स बहुत सारे हैं, मतलब जस्ट टू शो यू, फॉर एग्जांपल दिस इज़, अरे ये वेपन्स हैं, मेले वेपन्स. कितने वेपन्स हैं इसके अंदर, मतलब दिस इज़ व्हाट ऑल वी हैव कलेक्टेड. आपके पास ओदाची है, दिस इज़ एन ओदाची, मतलब these all you keep on collecting throughout the part. और ये स्विच क्लेव, साइथ, एक्स, स्पीयर्स, डुअल सॉर्ड्स, और ऐसा ऐसा करते हुए इतने सारे वेपन्स हैं. मतलब these are the weapons which you have collected while. तो इट्स लाइक कि है, मतलब कॉम्बैट वाइज मज़ेदार है, बाकी तो आई गेस ठीक है. मतलब वेदर इट्स द बेस्ट गेम आउट देयर, आई डोंट थिंक सो. मतलब दिस गेम कुड हैव बीन मच बेटर अगर इन्होंने स्टोरी एंड ऑल के ऊपर ज़्यादा काम किया होता. बट मुझे मज़ा आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि मुझे फास्ट पेस्ड एक्शन पसंद है. एंड सेम थिंग, मतलब दैट वेपन वाली, हाँ वही, द बिल्ड्स कैन बी, मतलब दिस इज़ ट्रू. अब जैसे दिस इज़ योर मेले वेपन, सेम वे दिस इज़ योर बो. यू हैव अ बो, यू हैव ईदर यू कैन हैव अ हैंड कैनन, यानी तानेगाशिमा बेसिकली जापानीज़ जो एक राइफल हुआ करती थी. और दुनिया भर की चीज़ें हैं, दुनिया भर का. अब जैसे ये इतने सारे, ये तो मतलब जो है, मतलब बस खाली कलेक्ट कर रखे हैं. उनकी रेयरिटी है, वेपन्स की रेयरिटी है, उनकी स्टैट्स हैं. एंड सेम गोज़ फॉर योर बिल्ड. ये देखो कितने टाइप के हेलमेट्स हैं, एवरी हेलमेट हैज़ सो मेनी थिंग. हाँ, बिल्ड, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली अ बिल्ड बेस्ड गेम. एंड मतलब अगर बिल्ड अच्छा है तो यू कैन डू क्वाइट अ लॉट ऑफ डैमेज. फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर हैमर विच आई हैव, ये लेवल में दिस गार्डियन मॉन्क्स हैमर, इसका डैमेज जो है वो 685 है. बट जो ऊपर वाले हैं जो लेवल में तो ज़्यादा हैं, लेकिन उनका डैमेज इतना नहीं है. तो आई गॉट दिस वेपन फ्रॉम वन ऑफ द मास्टर विच आई डिफीटेड. So this weapon is proving to be a good one, so I'm continuing with this particular weapon only because I'm loving the playstyle around it, and also the damage is pretty much in comparison to what I have collected as of now. So this makes your life easy in this game. But important thing is कि bosses से fight करने के लिए you need to parry and counter. Bosses इसके अंदर मस्त हैं. कुछ bosses तो मतलब बहुत ही अच्छे bosses हैं. मतलब बिकॉज मैंने कोई भी नियो, आई हैवंट प्लेड इवन अ सिंगल नियो बिफोर दिस. सो इनिशियली मेरे को थोड़ा सा इशू हुआ था. तो द फर्स्ट बॉस, नॉट द ट्यूटोरियल बॉस, द फर्स्ट बॉस जकोत्सु बाबा करके नाम है उसका, ही प्रूव टू बी कहीं ना कहीं अ चैलेंज बिकॉज आई हैड नेवर प्लेड नियो इनिशियली. तो इट टुक मी अराउंड 30 odd attempts to kill him. बट वंस ही वॉज डाउन तो आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि करना क्या है. मतलब इसके अंदर एबिलिटीज़ भी हैं, फॉरगेट अबाउट, मतलब मैं अभी वेपन्स की बात कर रहा था ना, अभी एबिलिटीज़ में, जिसकी वजह से गेम काफ़ी फन है. दिखाऊँ एबिलिटीज़ कैसी हैं. देखो, यू कैन समन समवन, दिस इज़ वन ऑफ द एबिलिटी. these guys will be shooting arrows for you, and also there are quite number of charms and talismans वगैरह जो कि you can use. So endless number of things. So this is because the possibility is so much of permutation and combination, which actually makes the game fun. You can play in whatsoever manner you want. I don't know who is going to spawn there. पहले इसको देखते हैं. अरे यार ये परेशान करता है यार बहुत. This guy has blades which he swings like crazy. See, I wanted to parry but couldn't. ये parry हुआ, ये सिर्फ डिफ्लेक्ट हुआ, ये कुछ भी नहीं हुआ. That is why I took damage. अरे man, that was a grab attack. Pretty evident. Does quite a lot of damage. Nice.
आ जाए एक बार वापस से। मर जा। एक तो एज पे खड़ा हुआ ना ये, मर जा। हाँ ठीक है, इस डेड। गिव मी अ सेकंड। Elden has comparable amount of weapon, talisman and build, but its story and lore is way better than Nioh. Of course, मतलब there is no comparison. Elden Ring is तो मतलब it's like the best game out there. Compare मतलब ये जो build based games और story and lore based games के comparison में, but Nioh is like कि कहीं ना एक casual fun version है एक तरीके से, ऐसा समझो उन सब चीज़ों का। कहाँ से मेरे को ये सब मिल रहा है, पता नहीं कहाँ से। You don't parry much in Elden Ring. हाँ, that is the difference. मतलब it's more of a deflect and dodge, not deflect, dodge based games. Mainline Souls games में मतलब मुझे नहीं लगता, हाँ बात ठीक ही है, but मतलब of course Sekiro might be an exception because maybe Sekiro is not exactly a Souls game but has a Souls element. तो इसीलिए दैट इज़ द रीज़न बिकॉज ऑफ विच इतना मेरे को समझ में नहीं आते ऐसे गेम्स जिसके अंदर जो बिल्ड बेस्ड गेम्स होते हैं, अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर पैरी का एलिमेंट हो। अगर इफ देयर इज़ अ पैरी एलिमेंट देन आई लव गेम्स लाइक दीज। तो नियो में खेल ही इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि अगर ये सिर्फ और सिर्फ अगर बिल्ड बेस्ड और डॉजिंग वॉजिंग वाला तो मैं नहीं खेलता इसको। Okay, this is like एक ऑप्शनल सा कैरेक्टर, ऑप्शनल बॉस टाइप का कैरेक्टर है। कोसाकू कौन है इसमें से, है कौन, कहाँ है वो? इतनी भीड़ में दिख ही नहीं रहा था। कोसाकू मासानोबू नाम है उसका। एंड बिकॉज अब मैंने इसको मैं डार्क सोल्स खेल रहा था ना, आई वाज हैप्पी विद इट, मज़ा आ रहा था उसके अंदर थोड़ा सा। आई स्टार्टेड डेवलपिंग दैट थोड़ा बहुत कि हाँ मतलब बिना पैरी के भी गेम खेल सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा आई स्टार्टेड दैट, बट कहीं ना कहीं फिर उसके बाद जब ये गेम आ गया तो आई थॉट कि बिकॉज इट्स अ न्यू गेम एंड इट माइट हैव सम ट्रैक्शन अराउंड इट, कंटेंट क्रिएटर वाइज सोचा फिर मैंने उसके अंदर। तो बट ऐसा कुछ खास कैन नॉट सी दैट थिंग हैपनिंग। यार आई हैव टू फाइट दैट गाय अगेन। How come? Impaled by Mr. Jailer Oni, no doubt. चलो वापस से चलते हैं। तो हर बार मैं भूल जाता हूँ। नहीं आने दिस साइड। हाँ आई डू समटाइम्स मतलब इन कॉलेज, बैक इन कॉलेज आई यूज़ टू प्ले अ लॉट। मतलब 1.6 मैंने बहुत ज़्यादा खेला है, बट फिर बीच में फिर ब्रेक आ गया एंड आई कुडंट। फिर मेरे साथ मतलब काउंटर साइड छूट गया एंड फिर जब CS2 आया तो उसके बाद खेला, लेकिन मैंने उतना नहीं खेला टू गेट गुड एट इट। इट्स जस्ट दैट कि आई डोंट मतलब वैसा स्ट्रगल नहीं करते हैं वहाँ पे, एवरेज खेल लेते हैं एक तरीके से। मगर हाँ मज़ा आता है जब भी खेलते हैं TDM। मतलब अगर मतलब स्पेसिफिकली जब तक मतलब ये अपडेट नहीं आया था ना कि मतलब यू कैन नॉट चूज़ डस्ट 2, अरे तो तब तक मैं ज़्यादा खेलता था बिकॉज डस्ट 2 में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। लेकिन इन्फर्नो मिराज उतना नहीं खेला है मैंने, तो इसीलिए अब कम कर दिया बेसिकली। एटलीस्ट वी हैव अ श्राइन, बट जाना किधर था अपन को? मरे कहाँ थे अपन, याद नहीं आ रहा। अच्छा हाँ वहाँ पे ना, दैट प्लेस भाई। लेट्स फाइट दैट ऑप्शनल गाय भाई। फ्लोर इज लावा, रिमेंबर दैट। अरे भाई पहले तो आइडेंटिफाई करूँ अपना बंदा है कौन, मुझे लड़ना किससे है।
Also, there is another character we can play as a samurai. So this samurai is the main character, and there is a shinobi as well. This shinobi guy is like he's a fast. भाई में से है कौन? यही है मेरे ख्याल से. I believe he is the guy. हाँ यही है. इतनी भसड़ हो रही है यहाँ पे. बाकी लोगों को निपटा रहा था, इतनी देर में आके वो मार जाता मुझे. और इज इट डेड? निपट गया क्या? आई गेस ही इज डेड. नहीं, ही इज फाइटिंग आउटसाइड आई बिलीव. हाँ, ही इज फाइटिंग आउटसाइड. लड़ लड़ा के आ जाएगा मेरे पास अपने आप ही, कोई बात नहीं. मैं इनको ही नहीं कर पा रहा हूँ. ओके भाई where am I? अरे dude, I got glitched. I thought कि क्या कहते हैं I'll be able to take advantage of that glitch there, but instead I only got killed right there. It's pretty much quite a number of things are happening there. पानी डालते हैं इससे. I'll kill him. कहाँ है ये? इतनी फसड़ में. He is giving good damage, but not enough. He's dead. So that is the only reason he was a formidable enemy. The point is I'm playing this because it is fun. इतनी सारी abilities and all ना. यार ये मेरे souls हैं यहाँ पे. चले जाओ उधर. हाँ ठीक है. या तुम्हें कुछ बातचीत करनी है भाई? You want to talk? No, you're not an NPC, I believe. I believe there is a boss fight. Is Crucible. This basically we are at this location. This is a Crucible, और ये मेरे ख्याल से ये जो white glow है, this might be a boss. And let's pray for our well-being. Let's pray that we don't die much. Do we have enough? No, we don't have enough points. Let's go. मुझे लगता है यहाँ पे शायद से, हाँ यहाँ पे there will be a boss. I believe there might be a cutscene. There is a boss fight. स्ट्रीम की शुरुआत में. When are you starting DS3 again? Probably after completing Nioh 3. This I believe, this I have heard about him. He's actually a pretty frustrating boss. He's a tough one. Takeda Shinjin. After completing Nioh 3, I'll be starting DS3 again. अगर कोई नया गेम नहीं आ गया तो. And I believe because we have completed around 30% of the game, Resident Evil आएगा. Resident Evil में खेलने वाला नहीं हूँ. Ghost of Yotei Legends आएगा. So Legends I'll be playing quite a lot because this boss is actually quite frustrating. I have heard about him. I have read about him. He's pretty much frustrating. Is it a spear? हाँ, it's a big spear. And this is basically इसका guardian angel है. हमारा guardian angel है ताकेदा शिनजन. Let's see, इसका pattern analyze करते हैं. Okay. इतना इजी अगर ये फर्स्ट फेज में, इसका मतलब सेकंड फेज इसका बहुत टफ होगा. अगर मतलब इसमें जो सेकंड फेज होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. मतलब बेसिकली अरे ग्रैब अटैक, दिस ग्रैब अटैक दिखता है ग्लो करता हुआ, बट फिर भी आई मिस. द साउंड ऑफ अ परफेक्ट पैरी इज ऑलवेज. अरे भाई नहीं, अरे उसको ग्रैब करना था यार.
Let's call few folks for our help. अरे अच्छा डैमेज दे रहे हैं यार इसकी की कोई है. He's weak against fire. What? हाँ, see something is happening to him. Maybe not. बच गया. Oh, he's a tough one. It's a pretty long game. हाँ मतलब there are 42 in totality. There are 42 bosses, formidable enemies and masters. तो I believe we have taken care of around 15-16 of them. मतलब 1/3 अपन ने शायद से निपटा लिए हैं. हाँ मतलब बिकॉज इट्स कि एक बार गेम स्टार्ट कर दिया ब्रो, क्योंकि ये गेम का जो भी थोड़ा बहुत मोमेंटम होगा ना ब्रो, तो वो अभी होगा. Missed that burst counter. एंड मतलब बिकॉज इसके बॉसेस में मतलब दीज आर दैट काइंड ऑफ बॉसेस जो मुझे पसंद है. इट्स जस्ट दैट मतलब जिसके अंदर यू नीड टू लर्न देयर पैरी एंड स्टफ. डार्क सोल्स के साथ क्या था, डार्क सोल्स है अच्छा लेकिन थोड़ा सा मेरे उससे अलग है. मिस्ड इट. मुझे लग रहा है इसका सेकंड फेज तो है. एंड ऑल्सो बिकॉज ही इज़ नॉट अ योकाई, तो इसलिए शायद से डार्क रेल में नहीं जा रहा है. बैड यार, इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है. एंड मे बी मतलब लेट्स सी, पता नहीं. नॉट अभी तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि नियो 3 ऐसे मैंने बहुत सारे गेम स्टार्ट करके बीच बीच में छोड़ रखे हैं. साइबरपंक छूटा हुआ है एंड लाइज ऑफ पी का मेरा DLC बचा हुआ है, वो DLC बचा हुआ है अभी. इसका स्पीयर का समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, कब आ जा रहा है एकदम से. इसके स्पीयर कितनी ज़्यादा रीच है. एक अच्छा बर्स्ट काउंटर करके देखना है. हाँ ये अच्छा बर्स्ट काउंटर था. ग्रैब हो गया यार. फर्स्ट ट्राई. दिस गाय विल टेक मी एटलीस्ट आई बिलीव 20-25-30 ट्राइज, और मे बी हु नोज, मे बी मोर, बिकॉज अभी तक अपन ने वी हैवंट सीन हिज सेकंड फेज एज ऑफ नाउ. अभी तो फर्स्ट फेज ही नहीं निपट रहा है. Bad time to heal. कहीं ना कहीं जो मतलब काइंड ऑफ बॉसेस जो लाइज ऑफ पी, ब्लडबॉर्न या सेक्यूरो में थे, तो कहीं ना कहीं वैसे ही बॉसेस हैं. तो दैट इज़ व्हाई आई एम हैविंग फन. तो इवन इफ आई बिलीव कि अगर मतलब आई एम पुटिंग आउट कंटेंट रिलेटेड टू इट एंड इट्स नॉट गेटिंग दैट ट्रैक्शन फॉर श्योर. पीछे आजा भाई, हील कर ले. अरे यार देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी, मेरे को उसको करना चाहिए था. ही वाज स्टैगर्ड. एक तो एकदम से इसका ग्रैब अटैक आ जाता है ना, जो ये एंड मेरे स्ट्रॉन्ग अटैक्स के बीच में ही इज इंटरप्टिंग इतना तेजी से. Okay, he's staggered. Now he'll go into his second phase. छोटा नहीं है, इसको बात ये है. क्या चल रहा है पता नहीं.
अरे डूड हो 1 सेकेंड में मार देता है, मेरी इतनी सारी हेल्थ रहती है. आफ्टर ही इम्ब्यूज हिज स्पीयर विथ फायर, इट्स लाइक कि मतलब ही गेट्स वेरी वेरी डेविस्टेटिंग. आई नीड टू बी थोड़ा सा केयरफुल. ठीक है. नाइस. पीछे आजा, पीछे आजा. आज की स्ट्रीम मुझे लग रहा है पूरी इसी के ऊपर डेडिकेटेड रहने वाली है. दिस गाय. अभी तक मैं कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर सेकंड फेज में करना क्या है. मतलब पहले दूसरे स्टैगर्स इतना इजीली ले लेता है, बट इट्स जस्ट दैट बिकॉज क्योंकि आगे के फेज में ये वैसे ही बहुत डेविस्टेटिंग है. ठीक है. ये स्टैगर्ड वंस अगेन, बट ये दो स्टैगर्स तो इजीली ले लेता है, मगर बाद में अब जो ये करता है ना, ये जो चीज़ है, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करूँ इसमें. समझ गया. पीछे आजा. लेट्स नॉट ओवरकम इट. व्हाट्स दैट? अरे हाँ, ऑलमोस्ट टारगेट था ये. मर जा. हाँ ठीक है, कूल. हुआ. अरे डू नाइस. हील ब्रो, हील. पीछे आजा. You don't want HP. Is it something happening? इसे हो डैमेज क्यों नहीं हो रहा है इसको भाई? हो तो रहा है. Oh, he's staggered. अरे पता नहीं क्या हुआ इसको. अरे डूड, ही वॉज ऑन 1 HP यार. मुझे लेकिन ये इतना इजीली 1 HP पे नहीं होगा यार. इसका पक्का मुझे लग रहा है सेकंड फेज है इसका. It was almost not on 1 HP, मतलब अराउंड 10% ऑफ हिज हेल्थ, बट इतना इजीली नहीं जाएगा. इज अ बॉस आफ्टर ऑल. इतने जल्दी नंबर ऑफ ट्राइज में ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. एक तो नॉट इवन फायरिंग वेल. ये तो खराब है, टाइम पर मर ही जाता है. डूड मुझे देखना था पक्का इसका सेकंड फेज होगा. आई एम प्रीटी श्योर. कितने जल्दी अटेम्प्ट्स में. आई डोंट थिंक सो दिस बॉस इज गोइंग टू गो डाउन. मे बी आई गॉट लकी देयर. समटाइम्स देयर इज. व्हाट काइंड ऑफ एन एक्सटेंडेड कॉम्बो वाज दैट? इससे पहले कभी था ही नहीं ये कॉम्बो. यार कितना अच्छा होता यार अगर मैंने उसको थोड़ा सा पेशेंस रख के मार दिया होता. Hey, welcome to the stream, Super Ariel 35. How are you enjoying this game? Is this game worth all the hype? Just taking a break from watching One Piece anime. It's actually, मतलब it depends, Super Ariel, that what kind of games you actually enjoy. There is hype around this particular game. Reason being, this is one of the best in comparison to the Nioh series. So if you are a fan of build-based open-world RPG which has a good elements, which has some good
which has given some good regards to parry and deflects, then you will be definitely loving this game. I too am liking it pretty much because it has quite a number of things which you can actually do. So this is basically a fun game, honestly. The initial के दो staggers तो easy ही हैं, as I have. बच गया. अब परेशान करता है. I just need a single hit. हाँ ठीक है. There's no point of spamming. अरे नहीं. अरे बैड. अरे dude, I was out of key. Okay. I'm a hot have been for many years. In that case, Super Aerial, you will definitely love this game. And if you don't have any other Souls or Souls-like or Soulsborne game to play, then you can definitely consider this game. This game is too much fun. If you have been a fan of Soulsborne, then you will definitely love this game. Alright, dude, I was supposed to burst counter. Okay, please. Bad. This game is of course it's a main boss. Then this, if he dies like this only, then there is no point. This boss won't be a memorable, not a rememberable, but a memorable boss for me. A boss which takes 30-35 tries and requires you to develop some skill around it. That is a boss which, in my opinion, is something which should be considered a good boss. गया, बच गया, अच्छा नहीं. I thought I had. I was out of key. That delay attack. Nice. Missed it, यार. मेरे को इसको I should have kept this for utilizing after the combo. See, this time if I would have kept that, then this guy would have staggered. Couldn't. I don't want my stream to be around this particular boss only, but even if it happens, then it's okay, no issues. It was such an easy parry, I couldn't. Like that grab attack is something which comes out of nowhere. Now we'll transform. He also has these summons. He's summoning a bull. Dude, I should have. I am grabbed. Array. This particular phase
key management is something which is very very essential. Of course, it goes without saying, just like any other Souls game. You tend to get carried away thinking that you will be able to take care of the boss, but the boss will always have a higher number of moves. Just keep this in mind. So, array dude, he parried that. Okay. But I believe that there will be a phase 2 to him. Okay, the Shunjin, I have heard a lot about you. This grab attack, dude. He parried that as well. Okay. Now he'll go into second phase. Nothing happens to him during this phase. Now this thing I am not able to understand. What is this green one? Dude, why do I go there every time during this? Ah, bad. Arey, he is so. Thank you for the information. I like your video and best of luck. Oh, thank you so much for that, Super Ariel, and thank you so much for the wish against this boss. Those best wishes. I don't think so that he's that hard. It's just that in the third phase, I don't know what kind of elemental damage he's doing in that particular green phase thing. Okay, cool. Okay. Ah, nice. Now I need to keep some distance. This thing also I'm able to manage, but talk about that green phase is something which I still need to figure out how that actually works. He's not ready to take any damage. He's literally crazy. Okay, now he has staggered. Now we need. Okay. Bhai Sahab, what kind of damage he is giving? I'm out of stamina. पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ. मर जा. कहाँ?
ही इज़ नॉट टेकिंग एनी डैमेज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. दैट ग्रीन एलिमेंटल स्टेटस इज समथिंग विच आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. क्या करें? लेट मी चेंज माई एट्रीब्यूट्स अ बिट. This I believe it's okay. कोई नहीं, let's try again. Missed it, yeah, missed it. Trying, I got greedy there. ये रन अच्छा नहीं होता in comparison to what we were initially doing. ग्रीन वाले फेस के लिए मेरे को अपनी ट्रांसफॉर्म वाली एबिलिटी बचा कर रखनी पड़ेगी आई बिलीव. ट्रांसफॉर्म एबिलिटी तो मतलब इंक्रीज ही नहीं हो रही है ना. अरे यार आई डॉज बट ऑफ कोर्स. ठीक है, पीछे आ जाओ. बढ़ जा. हाँ ठीक है. सबसे इरिटेटिंग चीज़ यही लग रही है. भाई इसको कुछ हो ही नहीं रहा है ड्यूरिंग दिस फेज. ड्यूरिंग दिस ग्रीन वाला ही इज नॉट टेकिंग एनी डैमेज फ्रॉम माई समन्स एज वेल. या काउंटर ही करूँ, और कोई तरीका है नहीं. मैं भी शायद से बर्स्ट काउंटर अगर कर दूंगा इसको तो आई विल बी डन. मतलब निपटा लूँगा इसको. आई नो. ओह, इज ही डेड? हाँ, इज ही डेड? इज ही डेड? प्लीज बी डेड, प्लीज बी डेड, प्लीज बी डेड. आई गेस इट्स डेड. कैसे ब्लेड्स, वेलकम टू द स्ट्रीम. हेलो.
Well, introduction to third is done now for straight lines. अच्छा, introduction of 3D. अच्छा अच्छा अच्छा, maybe. No, I believe there is a second phase to him. This is his guardian angel. इसको जगाएगा. मुझे लग ही रहा था, मतलब इतना easily first phase कैसे complete हो सकता है, मतलब ये boss कैसे जा सकता है. Anyway, he isn't dedicated. हाँ, of course, but I knew there is a second phase to him. My fight will continue. I knew that. इतना easily नहीं मर सकता है bosses भाई. Or maybe शायद से this will continue afterwards. Maybe because this will continue afterwards. Now we will be proceeding further. एक तो मैं चाहता हूँ कि बॉसेस अच्छे हों भी, और फिर जब मरने में ऐसा होता है ना कि जब नहीं मर रहा होता है देन आई एम लाइक ब्रो मर जा. चलो अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार लड़ लेंगे उससे. और बताओ लेट्स व्हाट्स अप विद यू. वेयर आई बिलीव आई नहीं, व्हाट्स दिस थिंग, इसको ब्रेक करना है शायद से. क्रूसिबल स्पाइक है शायद से ये. Acts like Asian, bro. You fight and once then again. हाँ, मतलब ऑफ कोर्स एशियन जैसा बॉस तो मतलब आई डोंट थिंक सो कि एशियन जैसा बॉस से मैंने अभी तक खेला, मतलब अगेंस्ट मैंने खेला है. एशियन वाली फाइट तो वाज लाइक कि अलग ही ज़्यादा एपिक. इट वाज एन एपिक. गेनिचिरो. मैं बिल्कुल बढ़िया ब्लिट्स, मैं बिल्कुल बढ़िया. व्हाट अबाउट यू? मतलब गेनिचिरो वाज द वन हु एक्चुअली कहीं ना कहीं taught us कि भाई हाउ टू एक्चुअली फेस द फाइनल बॉस ऑफ दैट गेम, बिकॉज उसके मूव्स जो थे दैट वर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक वर सिमिलर. तो इसीलिए एशियन वाली मतलब बॉस फाइट तो अलग ही एपिक. मतलब द मोमेंट व्हेन ही ब्रिंग्स अ गन टू अ स्वॉर्ड फाइट ना, तब तो ऐसा लगता है डूड ये तो अलग ही बायस्ड बॉस है. नहीं ऐसा नहीं है. इट्स बिकॉज ऑफ द दैट उसके अटायर की वजह से, उसका जो क्या कहते हैं जो हेड पीस है उसकी वजह से. ब्लिट्स क्या एडिटिंग किसकी? RDR2 की स्ट्रीम की, RDR2 के कंटेंट की. भाई देखो सुन तो रहा नहीं हूँ मैं, इसलिए स्किप ही कर देता हूँ इसको मैं. आई हैव डिज़ाइन दिस कैरेक्टर. भाई शक्ल तो मुझे पता है, शक्ल मैंने ही डिज़ाइन की है इसकी. इसको थोड़ा सा बैडास लुक देने की कोशिश की है मैंने, जितना हो सकता था इसके अंदर इस गेम में. यू कैन रिपेल गार्जियन स्पिरिट स्किल. यू कैन बर्स्ट विद गार्जियन स्पिरिट स्किल्स. अच्छा, बर्स्ट ब्रेक. लैंड अ गार्जियन स्पिरिट स्किल while an enemy is using a burst attack. Similar to style shift burst break, successfully repelling the enemy will interrupt the attack and lead damage to the life and key, which also greatly while an enemy is surrounded by अच्छा ऐसा, ओके. अच्छा, गॉड ऑफ वॉर, कूल. अच्छा रुको मैं इसकी शक्ल, कोई भी हेलमेट ऐसा नहीं है, मतलब हाँ दिस इज सम काइंड ऑफ एन हेलमेट जिसमें इसकी शायद से शक्ल दिखेगी. और कहीं शक्ल नहीं दिखती है क्या इसकी सही से? पता नहीं ब्रो, मेरे ख्याल से इसकी शक्ल कहीं और तो दिख नहीं रही. यही पहन लेते हैं. लेट्स मूव अहेड. वी हैव टेकन केयर ऑफ वन ऑफ द बॉस. किधर जाना? रिटर्न टू हमामात्सु कैसल एंड स्पीक विथ टोकुगावा इयासु व्हाटसोएवर. विल दिस डोर ओपन? नो, दिस वोंट. यार अपन गए तो अच्छा नहीं. मे बी गिव मी अ सेकेंड. यहाँ पे देर इज़ अ श्राइन विच इज़ स्टिल लॉक्ड. वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट श्राइन. अच्छा, दिस एरिया इज स्टिल, अच्छा ठीक है, कूल. देर इज अ क्रूसिबल समवेयर. नहीं, this is an entirely different area. I don't know how this area is locked. We need to... I don't think so that I can access this place also. Maybe from some other location, who knows.
एरिया तो आई गेस ये वही है। इट वुड बी बेटर कि अपन हमामात्सु कासल ही चले जाते हैं। ऑल्दो देयर इज अ कोदामा राइट देयर समवेयर। वेयर इज ही? लेगो बैटमैन खेला था, थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स इट्स लाइक कि काइंड ऑफ लेगो बैटमैन, मतलब अगर हम उसको उसके अंदर एक्सपेक्टेशंस वाली बात है ब्रो, कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको उसके अंदर अपन। अब लेगो बैटमैन तो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से होगा तो वैसा ही काइंड ऑफ चाइल्डिश में भी शायद से, नॉट श्योर, मैंने खेला नहीं है बट आई डाउट कि मैं शायद से कभी उसको खेलूँगा भी, मतलब नॉट श्योर बिकॉज मुझे इतना मतलब उतना अपीलिंग लगता नहीं है लेगो। और मतलब आई गेस वो अब क्योंकि कॉस्टली भी है तो व्हाट आर यू प्लानिंग, उसको कंटिन्यू करोगे, रखोगे उसको, कि उसको रिफंड करवाओगे? मतलब देयर इज क्या कहते हैं, एक उसकी ऑडियंस है ना, पीपल हु लाइक लेगोज एंड स्टफ, मे बी देयर माइट बी एन ऑडियंस टू इट। नीचे आ जाओ भाई। अरे dude, this attack. This was supposed to be done. मारा नहीं अभी तक भाई। There is a Kodama somewhere. There is a Kodama somewhere to the top of this, I believe. ऊपर बैठे हैं कहीं। यार यहाँ पर भी नहीं है। That Kodama was supposed to be at this place only. बट मैंने क्या कहते हैं ब्लिट्स, मैंने ये देखा था, मैं एक बार ट्रेंड्स पे देख रहा था, गूगल ट्रेंड्स पे, तो मुझे लेगो बैटमैन के ऊपर ना, मतलब मुझे दिख रहा था कि पीपल वर प्रीटी मच इंटरेस्टेड। तो इफ़ यू नॉट, मतलब अगर रिफ़ंड करवाने का ऑप्शन है और नहीं समझ में आया तो यू शुड डेफिनेटली रिफ़ंड। मतलब अगर नहीं समझ में आया, नहीं खेलना है। बट द पॉइंट इज़ कि इफ़ यू थिंक कि खेला जा सकता है तो फिर उसके अराउंड स्टोरी और अच्छा ग्लिचेस हैं, तो ग्लिचेस हैं तो ऑफकोर्स फिर तो पैच आ ही जाएगा उसका कहीं ना कहीं। अगर ग्लिचेस रिपोर्ट होंगे तो देयर विल बी पैचेस कमिंग आउट आई बिलीव, सो इन दैट केस तो फिर कर ही सकते हैं अपन। बट मतलब अगर स्टोरी अच्छी है तो आई बिलीव कि देयर इज़ गुड ऑडियंस उसकी, तो यू कैन ट्राई पोस्टिंग कंटेंट अराउंड इट, अगर रिफंड करने का ऑप्शन नहीं बचा है इन दैट केस। चलो एटलीस्ट मुझे जो लग रहा था कि उसी बॉस के अराउंड रहेगी स्ट्रीम, कम से कम वो चीज़ नहीं है। वी विल बी मेकिंग प्रोग्रेस नाउ। एक तो मैं इन लोग की, क्योंकि मुझे पता है स्टोरी फर्जी है, इसीलिए आई एम नॉट एट ऑल लिसनिंग टू व्हाट दीस गाइज आर सेइंग। रिटर्न टू डन स्पीक विथ तोकुगावा आयासु। तोकुगावा आयासु से तो बतिया लिए। मेक योर वे टुवर्ड्स साइगागाके तो यहाँ था ना, दिस इज साइगागाके। हाँ दिस इज साइगागाके। कभी सेकेंडरी कैरेक्टर अंडरवर्ल्ड में जाता है, सेकेंडरी कैरेक्टर अंडरवर्ल्ड जाता है, मतलब सेकेंडरी कैरेक्टर, मतलब इसकी बात कर रहे हो दिस शिनोबी गाय? अगर इसी की बात कर रहे हो तब तो इट्स लाइक कि यू कैन स्विच टू हिम एनी टाइम। इट्स जस्ट दैट कि मैं खेलता इससे नहीं हूँ बिकॉज आई लाइक, मतलब इसके जो वेपन्स, ये मतलब ही इज़ फास्ट, ही इज़ लाइक ऐसा है, बट स्टैमिना भी कम कंज्यूम करता है। बट द पॉइंट इज़ कि इसका डैमेज उतना ज़्यादा नहीं है, एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ स्ट्रेंथ बिल्ड गाय सोल्स लाइक गेम्स के अंदर। आई एम नॉट एट ऑल इनटू मैजिक, इंटेलेक्ट और ये सारे जितने भी अलग जो स्टैट्स वाले बिल्ड होते हैं, सो इसीलिए आई डोंट यूटिलाइज दिस गाय। तो ऑफ कोर्स यू कैन स्विच टू हिम एनी टाइम। दिस पर्टिकुलर रूफ रिमाइंड्स मी ऑफ गेनिचिरो। व्हेन यू अप्रोच गेनिचिरो, इस तरीके से इस पगोड़ा के ऊपर, यहाँ पे ऐसे एक हॉल के अंदर गेनिचिरो वेट कर रहा होता है। ओनली फॉर सेकिरो गाइस, दैट रेफरेंस। इसने बोला अपन को जाना है, कहाँ पे जाना था? साकेगा गाहे, क्या नाम था? साइगागाके।
साइगा गा के, अब मेरे को अगर साइगा गा के जाना है तो आई गेस आई विल टेक दिस रूट, साइगा गा के जंक्शन। सी ये अंडरवर्ल्ड में ही है, अगर इसी की बात करो आप कभी भी जा सकते हो, आप इससे खेल सकते हो। हेलो। To reach the cliff tops unnoticed, there is only one way for us to defeat Shingen. अच्छा Shingen से we'll have to fight again, fight well. We'll be fighting Shingen again. चलो इससे लड़के देखते हैं। एक सेकेंड, what's that? I believe let's go. लेगो गेम का सेकेंडरी कैरेक्टर वॉइड में गिर जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा उसकी बात कर रहा हो, ओके कूल। अच्छा, नाउ वी हैव टू डिफीट ताकिदा शिंजन अगेन। आई बिलीव नाउ ही विल बी इन इट्स ट्रू फॉर्म, ताकिदा शिंजन। दिस इज आवर गार्डियन, नॉट दिस एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ ऐसे ही। अपने पास भी एक छोटा सा गार्डियन एंजल है। लेगो गेम के बारे में तो बिल्कुल भी मेरे को आइडिया ही नहीं है उसके बारे में कि एक्चुअली में होता क्या है उस गेम के अंदर। सो अनटिल एंड अनलेस आई विल सी अ स्टोरी उसकी, तब तक तो नहीं समझ में आएगा मुझे। अच्छा, वी हैव एन ऑप्शन टू चेंज आवर गार्डियन स्पिरिट एज वेल। अरे क्योंकि अपन बेसिकली शिनोबी बन के खेल रहे थे ना। हाँ, नाउ अपने को एक नया गार्जियन वो मिला है। अभी तक हमारे पास ये था कुसानागी। कुसानागी अगर रहता है हमारे पास, अभी ये है डिस्ट्रॉयड स्पाइक्स रिक्वायर्ड टू अनलॉक। 2 स्पाइक्स हमको अभी और करने हैं। बॉइलिंग काउंटर, स्पिरिट फोर्स 40, ऑटोमेटिक रिकवरी, मार्शल आर्ट डैमेज बढ़ता है, अनटच्ड एलिक्जर्स, वाटर डैमेज, की पल्स रिकवरी, स्ट्रॉन्ग अटैक डैमेज, इंक्रीज आर्ट्स प्रोफिशिएंसी। कोई बात नहीं भाई, अब ले लेते हैं इसको ही। ये बेसिकली आपका गार्जियन एंजल रहता है, इसके पास कुछ मतलब वो जो ट्रांसफॉर्म होके थोड़े से टाइम के लिए यू कैन यूज़ इसकी पावर्स, मतलब अल्टीमेट फॉर्म बेसिकली होता है वो। Cool. Let's begin. Let's see what kind of an area this is. What kind of enemies, new enemies are there in Saigagake. And most importantly, in this particular area, our main mission is to defeat Takeda Shingen again. And now, I believe how many tries it took us there when we faced him the first time. I guess 7, 8 attempts, I believe. Bad. Confusing सा था उसका transformed attack. बच गया. Enemies have definitely gone stronger. अरे यार, भाई निपट जाऊंगा क्या मैं इसमें? अरे this time I fell short. Right, so there are 2 parts. Not exactly 2 parts. This is just a small stretch, or maybe. Oh भाई, अरे भाई पगला ही है तो। एक्चुअली ये गेम थोड़ा सा टफ इसलिए भी है कि मतलब जब कोई एनिमीज आते हैं ना, तो वो इस तरीके के ये वॉइड कोर्स, ये जो एरिया दिख रहा ना है, ये जो ये वॉइड कोर्स हैं वो क्रिएट करते हैं अपने नीचे। अगर हम उस वॉइड कोर के अंदर रहते हैं तो वी वोंट बी एबल टू रीजनरेट आवर की, एंड की इज़ बेसिकली योर स्टैमिना, एंड की इज़ रिक्वायर्ड फॉर डूइंग एवरीथिंग। सो दैट इज़ वाई दिस गेम is like कि इसके अंदर there are so many attributes, so many different elements,
have been combined, have been taken from variety of Souls games out there and have been put together. ये कैसी एबिलिटी है इसकी यार? This guy gives us good amount of loot, but you need to kill him. चलें आगे चलें. I hope there is nothing. स्टोरी और डेवलपमेंट, लेगो बैटमैन का स्टोरी और डेवलपमेंट बढ़िया है. ओके तो व्हाट इज़ द थिंग विच यू आर नॉट लाइकिंग? इज इट व्हाट, मतलब आई एम नॉट श्योर. क्या मतलब उसके अंदर कॉम्बैट वगैरह है? अगर कॉम्बैट है तो कैसा है? मतलब मैंने कभी सुना नहीं, मतलब क्या कहते हैं, मैंने कभी देखा नहीं है उसका गेम प्ले ऑनेस्टली. अब जैसे दिस इज़ समथिंग द काइंड ऑफ एन एनिमी विच आई हेट द मोस्ट. इसकी आती ही नहीं है पकड़ में. दिस ब्लडी हॉर्नेट. एक बार मैप चेक कर लें. ओके आई गेस इसकी घर की ये जो दिस पर्टिकुलर एरिया है, इसकी छत के ऊपर देयर इज अ कोदामा गाय. ओके दैट गाय इज अ टफ fella. That guy with 4 hands, 2 burning blades, 2 normal blades. That guy actually gives quite a lot of damage. And एक काम करते हैं, पहले इस एरिया को एक्सप्लोर कर लेते हैं, देखें क्या है इधर. क्या फर्जी सी एबिलिटी है यार इसकी. इसकी एबिलिटी अच्छी लगी नहीं रही है मेरे को सही मायने में. एक सेकेंड. स्लीपिंग डॉग्स थोड़ा जैसा है कॉम्बैट है बैटमैन से ज़्यादा. मुझे बैटमोबाइल अच्छा लगा. अच्छा स्लीपिंग डॉग्स जैसा कॉम्बैट, मतलब आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड स्लीपिंग डॉग्स का. ओके मेरे को मतलब देखना पड़ेगा. मैं एक बार देखूंगा ही फिर ना कि गेम एक्चुअल में है कैसा, तो मे बी शायद से आई माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड. एक तो सबसे पहले अपनी गार्जियन एंजल चेंज करूंगा. भाई ये बहुत फर्जी सा गार्डियन एंजल है ये. एक तो मैं 2 दिन से आई एम ट्राइंग कि मैं किसी तरीके से वर्टिकल स्ट्रीम कर लूँ. वर्टिकल स्ट्रीम करने से ज़्यादा पुश होती है स्ट्रीम एटलीस्ट. दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन. वर्टिकल स्ट्रीम ऑफ कोर्स, ऑल्दो दैट डजंट काउंट्स टुवर्ड्स द वॉच आवर्स. बट पता नहीं क्या इशू है उसके अंदर. स्टटरिंग इतना हो रहा है वो, मतलब चल ही नहीं पा रहा है वो. वाई देयर इज़ सो मच स्टटरिंग, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. किधर जा रहा है अपन, किधर जा रहा है. ओके is there a loot item somewhere? Why there is a shinobi right there. मरा.
लेगो के मार्वल गेम का गेम आया तो बढ़िया होगा। अच्छा, जिसमें सारे कैरेक्टर्स होंगे ऐसा बोल रहे हो ब्लिट्स? मतलब इसमें मतलब बैटमैन के अलावा भी मतलब काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हों उसके अंदर तब? हाँ ऑफकोर्स, अगर वैसा तो कुछ आएगा तब तो फिर ऑफकोर्स काफ़ी लोग उसको खेलेंगे, गिवन द फैक्ट कि जितने भी मार्वल फैंस वगैरह एंड ऑल। अपनी लॉन्ग रेंज कुछ तो यूज़ करें। बाय बाय। अपन सिर्फ और सिर्फ अपना ये हैमर ही रन कर रहे हैं तब से। आई हैव बीन स्पॉटेड आई बिलीव। अच्छा, ये वापस से एक तो इतना पतला सा एरिया है, हाँ उसके ऊपर ये लोग आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। These shinobis. Don't know whether this is actually a shortcut or what, because नीचे तो there is quite a number of loot items as well as there are quite a number of enemies already. अच्छा, there is a Kodama guy somewhere. At least there is a shrine. चलो shrine पे बैठते हैं. We can also rest. We can level up. स्ट्रेंथ काफ़ी अपन ने लेवल अप कर ली है, और स्किल बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? आर्ट्स प्रोफिशिएंसी, मेले अटैक। इंटेलेक्ट बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा भाई? की डैमेज डेल्थ, की रिकवरी स्पीड, मैजिक बढ़ाया तो क्या बढ़ेगा? ओनरी और मैजिक पावर। भाई वो सब तो अपन यूज़ कुछ कर नहीं रहे। कूल। अच्छा, देयर इज दैट कोदामा गाय। ऑफर में आया तो ले लो स्टीम से, बहुत बढ़िया है लेगो बैटमैन। अरे अभी तो कह रहे थे कि बहुत मज़ा नहीं आया उसके अंदर लेगो बैटमैन में। मतलब आई सी, अगर मगर इस तरीके से अगर कभी आया, बिकॉज लेकिन मेरे ख्याल से मेरे को तो लग रहा है कि अभी तो आया है गेम, तो इतनी जल्दी मतलब सेल में तो आएगा नहीं वो। आई हाईली डाउट। इसको नीचे कर देते हैं। वी माइट गेट भाग 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 भागा भागा भागा। भाई इतना बदमाश कैरेक्टर है ना ये। अरे भाई जब इतना परेशान है। एक तो भाई वी विद अ हैमर, firing a hammer guy has always been a challenge for us. Oh, this was also looking like a shrine, but it's not. अच्छा, now let's take care of this enemy पहले। बहुत सुंदर। इतना देर लगा होगा तो फिर यही होगा ये। ओके, हाँ स्टोरी बहुत बढ़िया है, कॉम्बैट बढ़िया है, बट ग्लिचेस भी हैं। सो अच्छा ठीक है, आई अंडरस्टूड। मतलब इट्स लाइक कि यू आर नॉट लाइकिंग इट, रीजन बीइंग दैट देयर आर ग्लिचेस, बट एवरीथिंग एल्स इज गुड। सो ऑफ कोर्स विल वेट फॉर अ सेल एंड विल सी कि कैसा चलता है वो। इफ़ इट इज़ गेटिंग गुड ट्रैक्शन तो फिर विल डेफिनेटली कंसिडर इट ब्रो। मेरे को एक सेकंड देना, मैं लाइट्स ऑन कर देता हूँ।
आई होप अभी ठीक होगा. लेट्स कंटिन्यू. लेट्स होप कि वी आर एबल टू फाइंड मिस्टर ताकेदा शिंजन. यार एक सेकेंड, मैप में मैं देख रहा हूँ तो दिस थिंग इज़ मूविंग. दिस क्रूसिबल रेट मैप में मूव करती हुई दिखाई दे रही है. सी, मैप के अंदर. वाई इज़ दिस थिंग एंटायर थिंग मूविंग? अच्छा, मैं समझ गया. इस केस में वो क्रूसिबल रेथ में बेसिकली दैट इज़ अ सिंगल कैरेक्टर जो कि इधर उधर मूव कर रहा है. दैट इज़ वाई. और देयर इज सम डार्क रेल्म यहाँ पे. ओके. ओके नाइस. बढ़िया. Nice. The sound of a perfect parry, as I have always said, is the most beautiful thing which your ears can actually hear whenever you are playing a Souls or a Souls like. अरे यार ये हॉर्नेट मरता ही नहीं भाई ये. इतना इरिटेटिंग लगता है ना ये मुझे. मैंने, हाँ मतलब हो सकता है ब्रो, मैंने खेला नहीं कभी लेगोस वाला कुछ भी. मतलब मैंने हैव सर. अब ये देखो ये पगला. अरे भाई तुम तो नीचे रहने चाहिए थे भाई, तुम ऊपर कैसे आ गए? भाई मैं सोचा था कि वो नीचे आराम से है भाई. भाई इतनी ख़राब एबिलिटी है ना मेरे गार्डियन एंजल की. डूड. भाई 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 अल्लाह की ज़्यादा बैंड बजाने में लगा हुआ है मेरी. है भाई. अच्छा बेसिकली ये क्रूसिबल रेट था जो घूम रहा था इधर उधर. ठीक है कूल. तभी टफ था भाई हमारा. एक तो मेरा गुस्सा इतनी आ रही. अगला श्राइन मिले तो सबसे पहले मैं ज़रा अपना गार्डियन ये एंजल बदलूँ. ये साला कोई एबिलिटी ही नहीं है इसके पास एक्चुअल में, या फिर है और मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ सही से. इन दोनों ही सिनेरियोस में आई विल बी चेंजिंग. अब कौन देख लिया मेरे को? अच्छा वो बेसिकली वो जो ऊपर शिनोबी था ही, मे बी दैट ओनली. नाइस. आउट ऑफ स्टैमिना. बाय बाय. ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. आई बिलीव दिस इज़ द ओनली वे. और तो मुझे लगता है नहीं कोई एरिया अपन ने मिस किया है एज ऑफ नाउ, और मे बी हु नोज. जाना अपन को टॉप पे ही है बिकॉज आई बिलीव दैट वाइट डॉट इज़ राइट सिचुएटेड राइट एट द टॉप, एंड दैट वाइट डॉट इज़ actually none other than Mr. Takeda Shinjen himself. He is ready to take revenge from us. अगर वो पहले बार में ऐसे थे तो I'm pretty sure दूसरी बार में मेरी बैंड बजाने के लिए is all set. भाई मेरे को नहीं गिरना, तुम्हें गिर जाओ. बाय बाय. बच गया. आई वुड हैव बीन. पहले तो मैं चल के ज़रा ना चेंज तो कर ही लेते हैं यार.
I'm not loving it. Where is my Guardian Spirit? I'll have Kusanagi only. Kusanagi को ही रखते हैं. चलो आगे चलते हैं अब यार. लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे एक वो भी रखा हुआ है, ट्रेजर चेस्ट भी रखा हुआ है. अब इस ट्रेजर चेस्ट के चक्कर में मुझे वापस से फाइट करनी पड़ेगी इन सभी लोगों से. और मे बी कैन आई मेक दिस जंप? आई डोंट थिंक सो. गए, बाय बाय हो गए. Where to actually reach this place? Maybe there might be a way somewhere. Instead of going straight, let's go this side this time. Maybe we might find. नहीं यार, घूम फिर के वहीं तो आ रहे हैं अपन. बचा 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 बचा. नहीं लड़ना तुमसे भाई. मानेगा ही नहीं भाई, मानेगा ही नहीं. क्यों मानेगा? अरे रे भाई, छाती में तीर मार दिया इनने भाई, वो भी जलता हुआ. ले, तीर जो था मेरा वो अड़ गया यहीं पे खंबे में. बाय. अरे नीचे मत गिर जाना ब्रो, उसको मारते मारते. अब देखते हैं. मेरे को जाना तो यार वैसे उधर था. हाउ कैन वी गो टू दैट प्लेस? वी नीड दैट ट्रेजर चेस्ट वहाँ पे, राइट? गिव मी अ सेकेंड. एक्चुअली दैट थिंग कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम दिस प्लेस. ये जो अंदर वाला एरिया है वहाँ से आके जंप करना है. मेरे पास बहुत टॉयज़ हैं लेगो के. हल्क बस्टर, बैटमोबाइल, आयरन मैन सूट स्टैंड, वॉर मशीन, ब्लैक पैंथर मेक सूट, बैटमैन का, विलन पेंगुइन का कार, कैप्टन अमेरिका बाइक, गार्डियन ऑफ गैलेक्सी का लेगोस भी. ब्लिट्स, आर यू श्योर यू डोंट हैव अ शॉप? मुझे लग रहा है यू हैव अ शॉप ब्रो. इतना सारा लेगोस ब्रो. मिस्ड इट भाई. हम लोग को तो कभी बचपन में, मतलब हम लोग के तो भाई इतना सारा, बचपन क्या मतलब, कभी ये सब टॉयज़ वगैरह तो कभी मिला ही नहीं जीवन में. हम लोग का टॉयज़, हम लोग को कभी बचपन में शायद से ये सब टॉयज़ नहीं मिले हैं शायद से. दैट इज़ वाई हम लोग कुछ ज़्यादा चुल रहती है कि बड़े होके गेम्स खेल रहे हैं, बड़े होके भाई जितना भी हम लोग वो हुए हैं ना कि भाई गेम्स नहीं खेल पाए, ये नहीं कर पाए, तो वो सारा शौक जो होते हैं हम बाद में जाके बहुत अग्रेसिवली पूरा करने लग जाते हैं. जब टाइम होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह लेने का, वी आर लाइक कि नहीं अभी तो गेम खेलना है अपन ने, तो अभी तो गेम खेलेंगे. जो बचपन में गेम खेलने को मिला नहीं था मेरे को वो सारी चीज़ें. बट इट्स गुड. दैट मीन्स दैट यू आर अ फैन, एक तरीके से फैन. इन लोग को फ़र्क ही नहीं पड़ा कि इनका लड़का जो था वो शहीद हो गया अभी. दे आर लाइक कि you are basically a big fan of Lego. नहीं, that is pretty much evident given the fact you have so many Legos. So that's pretty much evident. इतना बेसिक सा था यार, ये तो पारी कर देना चाहिए था. कितना जल्दी वी विल बी फेसिंग दैट गाय अगेन. अरे दिस इज बेसिकली आवर alter ego. Gives good loots.
good loot items basically. Now where to go to? Am I supposed to descend the ladder? I believe yes, but before that, before going towards that area, let's see whether we can access some place other than this. I don't think so. We can. This bridge cannot be accessed for sure. What am I supposed to drop down? एक्चुअल में तो जाना मेरे को यहाँ पर है. ऊपर जाना है बेसिकली, यहाँ से कहीं ना कहीं रास्ता पकड़ के. Excuse me. I don't think so. I'm on the right path, honestly. अपन आए यहाँ से तो ना, अपन घूम के जाना है यहाँ से. I believe. हाँ. And but before that, अपन वो लूट आइटम तो कलेक्ट कर ही सकते हैं. शायद अब कलेक्ट कर पाए अपन, मे बी, who knows. नहीं, अभी नहीं कर सकते. मेरे एक अंकल ने दिया था लेगो हल्क बस्टर 20,000 रुपये का. भाई तुम्हारे वैसे जैसे जैसे अंकल हैं ऐसे अंकल सबको मिले भाई. 20-20 हज़ार के खिलौने दे दे रहे हैं. मतलब खिलौने तो नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब इफ़ यू आर अ फैन, बट भाई ऐसे अंकल सबको मिलने चाहिए यार. इतने बढ़िया बढ़िया, इतने महंगे महंगे खिलौने दे रहे हैं. यू आर लकी टू हैव एन अंकल लाइक दैट ब्रो. I believe how to actually reach that spot. भाई बड़ा ही ज़्यादा अलग तरीके से प्लेस कर रखा है उन्होंने उस वाले क्रेट को वहाँ पे. Honestly, I am not able to find a way. ये कहाँ पे जा रहा है ये भी नहीं पता. इनिशियली आई थॉट कि बिल्कुल सामने सामने वो होगा और वो विल बी एबल टू एक्सेस इट. और मे बी वहाँ पर रुक जाए, पर देखे तो सही कौन सी सीढ़ी जा रही है. जा ये वाली रही है ये, और उसके लिए पहले उधर जाना पड़ेगा. रुको, बट वहाँ कैसे जाएंगे? और ऊपर से भी आ सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो. अब इतनी मेहनत करके आई विल बी फिगरिंग आउट कि कैसे इस वाली क्रेट तक जाना है. अच्छा, यहाँ से तो जा ही सकता हूँ शायद. कैन आई मेक दिस जंप? आई स्टिल डाउट. आई डोंट थिंक सो दैट आई विल बी एबल टू मेक दिस जंप. दिस इज़ अ फार स्ट्रेच. नहीं जा सकता, इतना दूर तो नहीं जंप होगा भाई. और बट मे बी शायद से दैट वन पर्टिकुलर वो वाला हो पाएगा क्या? ये शायद से हो जाए. चलो इसको ट्राई करते हैं. लेट्स टेक दिस रिस्क. हो गया क्या? आ रहा है, ठीक है. चलो, इतना नहीं सोचना था. इन्होंने इतना कंफ्यूजिंग बना रखा था भले इसको, लेकिन ऐसा था नहीं. मे बी दिस वॉज डिज़ाइन सो दैट वी कैन रिटर्न बैक वापस से इसमें. दिस इज़ आई बिलीव ये सिर्फ रिटर्निंग का था, रास्ता वही था. चलो लेट्स मूव फर्दर. अरे रू रू रू, नेवर थॉट कि ये मिल जाएगा यहाँ पे.
भाई दिस गाय, ये वैसे कि लेकिन उससे कमज़ोर है। हाँ, कैरेक्टर वही था बट दिस वन वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। हाँ कूल। ओके, देयर इज़ अ कोदामा समवेयर, बट ये कोदामा गाय इज़ आई बिलीव टू द टॉप ऑफ दिस एरिया। आवाज़ आ रही है, वहाँ पर है कहीं छुपा हुआ। Our only target now is to face Mr. Takeda Shinjen again. Let's just want to see what kind of powers will he have this time. जितना सन्नाटा हो रखा है उस हिसाब से आई बिलीव देयर इज सम बिग एनिमी अबाउट टू पॉप अप फ्रॉम समवेयर, और म्यूज़िक भी चेंज हो गई है। हाँ पक्का पक्का कुछ तो कुछ होने वाला है। यहीं कहीं छुपा होना चाहिए दैट कोदामास। इधर अगर नहीं है तो फिर किधर है? एटलीस्ट चलो एक श्राइन है यहाँ पे, करेंगे रेस्ट करेंगे इसके ऊपर। म्यूज़िक चेंज हो रही है। एक तो वैसे भी दीज पीपल हैव मतलब ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाला इन लोगों ने म्यूज़िक के अंदर। काम करते हैं, लेवल अप कर लेते हैं। वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ पॉइंट्स। क्या बढ़ाएं? स्ट्रेंथ ही बढ़ा लेते हैं। स्ट्रेंथ बेस्ड है तो स्ट्रेंथ बेस्ड ही बढ़ा लेते हैं। लेट्स गो फर्दर। भाई हैमर से खेलने में जो मज़ा है ना, अरे भाई बुरा मान गया। अरे डूड मेरे को सेकिरो मत याद दिलाओ भाई, योबू की याद दिला रहे हैं ना। छोटे छोटे एनिमीज भी मेरी बैंड बजाने में लगे हुए हैं। मर जा, स्टैगर ही नहीं हो रहा। अब मरेगा। अच्छा बेसिकली ऑफ कोर्स क्योंकि क्रूसिबल असेंबल करने के लिए मुझे 3 दिन लगा है। हल्क मेरे को क्या कहते हैं ब्लिट्स अगर होगा तो मुझे डिस्कॉर्ड पर ज़रा फ़ोटो भेजना है। वांट टू सी कि वो दिखता कैसा है। ब्रो व्हाट इज़ दिस एरिया? आई थॉट कि इस एरिया के अंदर यहाँ से म्यूज़िक चेंज हो रहा है तो देयर विल बी अ बॉस फाइट समवेयर। आई वांट टू सी एटलीस्ट कि कैसा दिखता है भाई। ये सब महंगे महंगे जो ये चीज़ें हैं। यार एक बात बताओ, ये एरिया कौन सा है फिर? भाई इधर तो मुझे वो डॉट दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि दैट वाइट डॉट इज द मेन बॉस। काफ़ी सारे बंदे क्या यहाँ पे? बहुत तो बंदे नहीं है, ठीक है। हील कर लेते हैं, हील कर लेते हैं। अरे भाई छोटा लड़का अपन को दबोच लिया भाई। यही होता है जब आप स्पैम करते हो, पैरी करते हो तो ये होता है। मिस्ड इट, मर जा। ओके आई थॉट कि बर्स्ट अटैक करके उड़ाई देगा मुझे। भाई म्यूज़िक चेंज हो रही है तो इसका मतलब देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अगर जब अपन उस बॉस के पास जाएंगे। बट वन थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड, देयर आर 2 गेट्स। देयर इज़ दिस 1 गेट एंड इसके पीछे मुझे लग रहा है ये ओपन अगर कर दिया तो मेरे ख्याल से बॉस फाइट स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज वो वाइट डॉट तो वही लग रहा है। तो पहले अपन उस एरिया को कंप्लीट करके आते हैं विच इज़ देयर। इसके अंदर देख लेते हैं कुएं के अंदर क्या है। कुएं के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लूट आइटम था। जस्ट वांट टू सी कि इसमें क्या है, इस एरिया में क्या है। ये
साइका काके से बाहर जा रहा है ये एरिया तो। चलो कोई बात नहीं, वेलकम बैक अगर ज़्यादा कुछ ओके ठीक है। अरे नाइस, बहुत सुंदर, बिना डैमेज लिए इसको निपटा दिया, अलग ही मजा आ गया। अब ये दरवाज़ा खोलेगा क्या? तो बेसिकली इस एरिया में कुछ नहीं था इसका मतलब। राइट, सो आई बिलीव नाउ कि अच्छी बात है कि इस एरिया में कुछ है नहीं। द ओनली वे फॉरवर्ड इज थ्रू दैट मेन गेट। आई बिलीव देयर विल बी मिस्टर ताकेदा शिंजेन waiting inside his this big monastery dojo whatsoever। भाई लंगड़ा के चल रहा है भाई हमारा कैरेक्टर, थक गया भाई। लेट्स गो, कट सीन। Yeah, there he is। Now this will be a big fight। मिला था 2021 पर, बहुत ट्रेंडिंग में था। अच्छा ऐसा ब्लिट्स, ये मेरा गार्डियन एंजल है, छोटा सा बिल्लौटा, ये छोटा सा बिल्लौटा देख रहा है? वो उतने बड़े भैंसे, या फिर ये भैंसा नहीं है मतलब, इट्स अ लायन, बिग लायन, उसके सामने जाके बकैती कर रहा है। स्पिरिट स्टोन। Why this is going to be a strong fight now। Now this human will turn into a yokai। इससे लड़ना है अपन को अब। चलो लेट्स सी क्या लगता है गाइस, कितनी बैंड बजेगी अपनी, देखते हैं। ताकेदा शिंजेन फाइनली इन इट्स ट्रू फॉर्म। शुरू होते ही ख़त्म होना का मतलब अच्छा बॉस है ये, तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड साइन। मज़ा आने वाला है इस फाइट के अंदर, वापस से फिगर आउट करना पड़ेगा। अब शायद 13,000 15,000 की बात करो ना ब्लेट्स, 13-15 रुपये नहीं ना, 13 to 15,000 रुपीज़ या सेइंग। मज़ा ही आ गया भाई, क्या भाई ने क्या छाती पे दिया मेरे। मतलब पॉइंट इज नहीं, वहीं जाना है उसके डायरेक्टली पास में कहीं पर कोई वो नहीं है। देयर इज नो श्राइन आई बिलीव। एक सेकेंड, दिस इज द ओनली वे। नहीं, इस तरफ थोड़ी है वो। इधर है। भाई कितने बड़े बड़े कॉम्बोज है इसके भाई। एक्चुअली जो बड़े एनिमीज है ना इसमें, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब वो अपने सेकंड
अभी तो मतलब टाइम लगेगा इसके मूव्स ही समझने में। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जब ये इनकी एक बार जब आप इनकी स्टैमिना, मतलब पहले तो ये चीज़ बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि इनका जो स्टैमिना है वो बिल्कुल ज़ीरो कर दो। और जब आप ज़ीरो कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा, वो डार्क रेल में चले जाते हैं जो योकाइज होते हैं। योकाइज आर बेसिकली दोज एनिमल लाइक डार्क एनिमल एनर्जी वाले जो क्रिएचर्स हैं। तो उस टाइम पे ये पूरे मतलब पूरे एरिया में इतना नाचने लग जाता है ना। अरे यार ये मेरे को ग्रैब अटैक की भी विंडो समझनी पड़ेगी। फाइल ले 60% से ज़्यादा हेल्थ ख़त्म कर दी उसने अपने ग्रैब अटैक से। अरे कब डॉज करना है? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कितने अटैक्स हैं इसके। मैं कब अटैक करूं भाई? तू करता रह जाएगा तो। बाय बाय। हालांकि ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। दिस विल बी अ वाइल गाइस। आई वॉजंट रॉन्ग व्हेन आई सेड कि आज की जो स्ट्रीम है वो ताकेदा शिंजन के अराउंड ही होगी, इसी को मानने में। पहली बार जो अपन ने निपटाया था उसको, तो दैट वाज इन हिज ह्यूमन फॉर्म। नाउ वी नीड टू फाइट हिम इन हिज योकाई फॉर्म। अभी इसके कॉम्बोज बड़े लंबे लंबे हैं यार। ठीक है, ये तब भी थोड़ा सा डिसेंट सा है। अरे यार किधर जाऊँ ग्रैब अटैक से बचने के लिए? मे बी आई शुड डॉज इनटू हिम रादर देन लेफ्ट और राइट। मजा आ रहा है बहुत ज़्यादा। The whole reason जिसकी वजह से we play games like these is this only guys, right here. Look at the happiness on my face. शक्ल पे अगर नहीं दिख रही होगी तो it's like कि मन के अंदर होगी वो खुशी। मन के अंदर झांकना पड़ेगा आपको। हाँ ये if we dodge into him then we are able to। क्या ऐसे पैरी करें इसको? दिस विल बी अ गुड फाइट, दिस विल बी अ लॉन्ग फाइट आई बिलीव। फिर मैंने पॉकेट मनी कलेक्ट किया, मैंने फर्स्ट बाय किया था स्टार वॉर्स का स्पेसशिप 8000 रुपीज़ में। ओके मैंने शायद से वो स्टार वॉर्स वाली स्पेसशिप शायद से देखी हुई है, बट लेकिन फिर भी मेरे को भाई फ़ोटोज़ भेजना। आई वुड लव टू सी। इतना सारा अगर लेगो का कलेक्शन है। और हल्क बस्टर तो यार देखने में और ही ज़्यादा मज़ा ही आएगा। आयरन मैन का मोटा वर्जन बेसिकली। हर बार जब भी स्टूडियो होता है किसी नए मूव से ही स्टार्ट करता है, कोई पैटर्न भी नहीं है भाई का। बाबा कुछ कर ही नहीं सकते हैं भाई, क्या करूं? गीत तो शुरू होते ही ख़त्म हो जा रहा है। मतलब जितना टाइम मुझे दौड़ के आने में लग रहा है उतनी देर में तो मैं 3 बार मर जा रहा हूँ इस बंदे से। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको खेलने में। इतनी बार में जब तक मैं इसके द्वार पे पहुँचता हूँ, इसके दरवाजे पे पहुँचता हूँ भाई के, बाय द टाइम आई रीच दिस पर्टिकुलर डोर इन दैट टाइम आई एम डाइंग लाइक थ्राइस। गेम शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। अरे मैं समझा इसके 4 हाथ है ना। ले भाई दबोच लिया इसने। इसके 4 हाथ हैं तो वो उन्हीं हाथ से ही फटाफट वो अटैक्स कर दे रहा है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि सारी विंडो समझ में आ नहीं रही है।
पैरी विंडो तब समझ में आएगी, पैरी विंडो तो आ ही जाएगी समझ में, लेकिन उससे पहले अटैक कॉम्बो समझने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है। अभी तो मुझे वैरायटी ऑफ अटैक कॉम्बोज दिख रहे हैं। पीछे आओ यार, पीछे आओ। He's so relentless भाई, किस चीज़ के अगेंस्ट वीक है ये। हाँ चलो, एक बार तो कम से कम स्टैगर हुआ, स्टैगर भी नहीं हुआ। हाँ वो उस वाले फॉर्म में चला गया। ये है वो डार्क रेल्म फॉर्म योकाई का। ओह ये फायर के अगेंस्ट मुझे लग रहा है वीक है भाई। भर दिया ने, भर दिया, मेरे भर दिया इसने। मुझे ऐसा लग रहा है ये फायर के अगेंस्ट कहीं ना कहीं वीक है भाई। ये तो गोकू टाइप्स लग रहा है भाई एकदम। रुक जाओ भाई, मैं ट्रांसफॉर्म करके खेलता हूँ एक बार, देखूँ उसको डैमेज होता है क्या। थोड़ी सी देर की जो ये शक्तियाँ हैं भाई, इनने भर दिया मेरे, भर दिया इनने भाई। क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ भाई। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ताकेदा शिनजेन। और मे बी आई एम नॉट सपोज टू, मतलब ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा अटैक्स को मुझे। कांट गो, मतलब एकदम अनलीश, फुल ऑन अनलीश नहीं कर सकते अपन, बिकॉज ही इज़ फाइंडिंग हिज वे टू इंटरप्ट आवर कॉम्बोज एज वेल। भाई 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 गेम तो बहुत मुश्किल लग रहा है। गेम मतलब टफ है ब्रो, मतलब किसी भी गेम, मतलब जैसे सोल्स लाइक गेम्स में क्या होता है कि जो बॉसेस होते हैं, बॉसेस आर सपोज टू बी हार्ड। ये मतलब हार्ड तो है ही ब्रो, ये तो मतलब अच्छा खासा टफ गेम है भाई। बट ये देखो एक्चुअली में होता क्या है ना कि जब सोल्स लाइक गेम्स में, सोल्स गेम्स में जब बॉसेस होते हैं, होता क्या है कि आप कई बार उनके अगेंस्ट हारते हो, कई बार उनसे मतलब देखते हो, और मतलब होता क्या, आपको उनका अटैक पैटर्न सीखना होता है। गलतियां जो आप कर रहे होते हो वो आपको सीखनी होती हैं, और हर बार जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में आते हो तो आप थोड़ा सा बेटर प्रिपेयर्ड आते हो कि इस बार ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन वो हमेशा पॉसिबल हो नहीं पाता है, दिख ही रहा होगा। cannot do that। तो वही वाली चीज़ें हैं कि मुश्किल तो है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब कई बार इससे निपट जाएंगे तब ऑफ कोर्स अपन को वो आसान लगने लग जाएगा। नॉट एग्जैक्टली आसान लगने लग जाएगा, आसान तो मतलब इट्स नॉट द राइट वर्ड, मैनेजेबल लगने लग जाएगा। बट सोल्स गेम्स और सोल्स लाइक गेम्स की खूबसूरती यही होती है कि बॉसेस, अगर कोई बॉसेस हैं तो उनकी एक रेपुटेशन होती है बॉसेस की, दे वोंट डाई दैट ईजी। अगर कोई बॉस इतना आसानी से निपट गया तो वो गेम मेमोरेबल नहीं होता। एंड सबसे अच्छी चीज़ तो ये देख रहा हूँ कि साला ये हर बार नए पैटर्न से शुरू कर रहा है अटैक अपने। मुझे इतना ज़्यादा इसके ऊपर अटैक कर नहीं सकते यार। मैं गलती कर दी यार। सी ज़रा सा मैं थोड़ा सा
मतलब फ्लो में मैंने मतलब जब कोशिश करता रहा कंटिन्यू करने को, करना चाहिए था नहीं जबकि अलग ही स्ट्रॉन्ग बंदा है भाई ये, खास तौर से डार्क रेल में तो ये और ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आई एम डेड। पीछे आ जा। एकदम बैंड बजाया पड़ा हुआ एकदम हमारी। Bad time to do that. अरे नहीं ओके कूल। Bad. I'm out of key. अरे यार इजी है हो जाएगा। इजी है हो जाएगा। आई बिलीव नाउ कि ये हो जाएगा। समझ गया क्या करना है। जो सेकंड फेज़ में सेकंड फेज़ में उसके पास बहुत सारे मूव्स नहीं हैं। दिख रहा है इजी है बट कैसे हो सायर? वेलकम टू द स्ट्रीम, लॉन्ग टाइम ब्रो। आई एम ऑल वेल सायर, थैंक यू। व्हाट अबाउट यू? आप कैसे हो ब्रो? हो जाएगा। 5-6 अटेम्प्ट्स लगे हैं अपन को अभी तक, लेकिन मतलब आई नो कि सेकंड फेज़ में हो जाएगा। थोड़ा सा लक चाहिए। टाइमिंग तो अपनी सही होनी ही चाहिए। ले अभी बोला हो जाएगा। एक तो इसके 4 हाथ है ना, हर एक से कॉम्बोज नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं है ब्रो। ये मुश्किल नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा टाइमिंग फिट बैठना चाहिए। लक मेरे को चाहिए कि मेरी टाइमिंग फिट बैठ जाए। मतलब जब अभी जो सेकंड लास्ट अटेम्प्ट था ना, उससे मुझे समझ में आ गया था कि हो जाएगा। सेकंड फेज में उतना टफ नहीं है। इट कैन बी किल्ड, जल्दी मर जाएगा। अब मैं मतलब दिस इज़ मी बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। बाकी हो सकता है कि हम सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा लकी हो गए हो सकता है, बट हो जाना चाहिए। बाकी देखते हैं। ताकेदा शिनज़न गलती कर देता हूँ ना मैं। पार ही नहीं किया सही से यार। ये हील कर भाई।
ये फेज़ निकालना है किसी तरीके से। अरे डूड, बर्स्ट काउंटर कर लिया होता तो हो गया होता ये। दिख ही नहीं रहा क्या पैर ही करूँगा इसको मैं। भाई नहीं 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 नहीं, शिट, बैड बैड बैड। Okay, he's gone into this phase again. Bad. ये तो खराब कर दिया, खराब कर दिया टाइम मैंने अपना। I was expecting something else. दूसरा मूव एक्सपेक्ट कर दिया यार मैंने। भाई बैंड बच गई। अरे यार, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। मेरे को देना यार, एक थोड़ा सा काम आया, मैं आता। अच्छी चल रही थी फाइट, लेकिन मतलब ये है कि डुएबल है, हो जाएगा, दैट आई नो।
चलो भाई, लेट्स बिगिन। वापस से मेहनत शुरू करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ऑल्सो एक बार अगर वो ट्रांसफॉर्म वाली एबिलिटी आ जाती ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं ना कहीं, लेकिन होता क्या है ना, जब वो ट्रांसफॉर्म वाली एबिलिटी आती है, ट्रांसफॉर्म वाली एबिलिटी इज़ बेसिकली नीचे वाला जब मेरा येलो बार जो है वो फुल हो जाता है ना, फाइट कर करके तो अच्छी शुरुआत हुई थी काफ़ी। बे यार, इतनी अच्छी स्टार्ट थी ये। दिस वाज एक्चुअली अ गुड स्टार्ट। अच्छे पैरीज करके वी डिड। थोड़ा सा मतलब इसमें ये है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर फ्लो में निकल गए ना, कि मतलब थोड़ा सा स्पैम कर दिया आ जाओ, थोड़ी सी उसकी हेल्थ बची हुई है, थोड़ा सा उसका की बचा हुआ और स्पैम कर देते हैं, तो द गेम विल एक्चुअली पनिश यू। तो यू नीड टू बी पेशेंट एंड अग्रेसिव वेरी, मतलब स्ट्रैटेजिकली इस गेम में। तो that is why this is the reason because of which the boss fights are actually pretty good in this game. Why he followed this with a second grab attack? Arey, I actually got confused. No, that was a burst attack. Bad. I'm out of key. Let's transform. बचने के लिए मेरे पास और कुछ है नहीं अभी। Let's go back. अरे नहीं, I still got grabbed. I rolled. अरे dude. Hey Silverback, welcome to the stream. You started to play Nioh 3 today and reached level 15 so far. I've defeated like 5 mini bosses. It's nice, bro. That's actually a very good progress considering the fact that you have defeated 5 mini bosses. It's good. Basically, I guess you might have defeated few even formidable enemies and maybe the tutorial boss as well. And you are actually making your way towards Jakotsu Baba, and in that way you have found few formidable enemies. This guy is like, he continues his attacks even after landing that big hit. Sometimes he will, sometimes he will not. That is what is actually making it a challenge. So understanding the combo is actually slightly difficult, but this boss is not that hard, honestly. It's just that it is just a matter of time and he'll be killed. We need to parry well. We need to strategize the usage of our abilities well. Then only
we'll get him down. Cannot spam, cannot spam. See, within our combos, he will Blood Edge Demon, sorry, Silver, you are not supposed to fight him right now. The point is, even I found him in my way, and he's actually pretty tough. If you have played Bloodborne, he definitely looks like Murgo's wet nurse with so many blades around him. So you're not supposed to fight him. That particular optional character is actually pretty tough. Raise your level a bit and then go back to him. He's not that tough, but I'm making those mistakes which I am not supposed to. This guy has 4 hands and trying to parry him is such Mara. Done, I'm done with. I took a break initially in my runs I was doing so well. Took a break of 5 minutes and lost that momentum right there. Nevertheless, I fought Blood Edge Demon like 1 or 2 times, and that too on stream only, and I knew that I wasn't ready for him as of now. The combos are actually pretty tough to figure out that which combo is coming next. Once this combo starts, I'm pretty much done with. Arey, got grabbed. Instead of the Odachi, is it because of more damage? Initially, I was using the Odachi, and I reached one particular area. I'll tell you. I'll show you the reason because of which I'm using the hammer. I'll tell you right here only. It's low than the recommended. Acha. See, this whole getup, this whole attire is actually. Where is my equipment? This is the Guardian Monk's hat, Guardian, and this is the Guardian's Monk hammer. There was this one particular area. Let me recollect whom I fought there. Give me a second. Let me check the map. I'll tell you. I fought one guy. Right in this one particular area. Right here. This guy. Remember this particular location. This location is Lake Hamana, whatsoever you call it. And there was this one particular enemy right inside this castle. We fought that guy, and after this, there was this one particular master. Master is what? These are actually some strong characters, just like a formidable enemy. We fought this guy. I fought him on stream only, I believe, in my day before yesterday's stream. This guy gave me this particular whole attire and this particular hammer. The reason because of which I'm actually using it, you will see. The initial Odachi which I was using was, see how much far we have come. From that time we have actually gained quite a number of weapons. This was the Odachi which I was using. It was the attack damage, it was 389, and the hammer which I got from that guy after fighting him, you'll see the damage on this particular weapon. See, Guardian Arms. The attack damage is 685. So
And in comparison to till the time I have been playing this game, there is no weapon which has come even close to it. Or maybe if I'm not wrong, if there might be something. Oh, there is another axe. This is 688. Matlab, you got my point, right? These all the topmost weapon. Oh, this is also a 782. Why I'm not using this weapon? Let me use this weapon in that case. So that was the whole reason because of which I ditched the Odachi and started utilizing the axe. I was loving playing with Odachi, but I have read about this one particular thing, that spear is actually pretty much OP in this game. What about this particular? Why I'm not using this? I should use this particular weapon only if that's the case. And if that is the thing, also let me change the armor as well. Let me change everything. 81. Anything better than this? 81. No. So you can also try utilizing the Odachi, in my opinion. No, the spear. The spear is pretty broken in this particular game. So you can definitely go ahead and try playing with the spear as well. I'm changing everything. Not sure how this is, whether this thing is going to help me or not, but I'm definitely changing stuff. Also try keeping everything in green, the equipment weight as well as the toughness. Make sure that these two things are in green whenever you're changing your weapons or the armor sets whatsoever. Looks nice. Also this thing, I have realized quite a number of things after spending a lot of time, after watching quite a number of videos. Honestly, there are so many things in this game that the game doesn't teaches you. The game never guides you that you can do this, you can do that. There are n number of things. I got to know that you can use abilities which are there on the left side of your screen only when I had so many attempts while facing Jakotsu Baba. That is one particular strong boss in my opinion. Not sure. I believe my stamina, my ki will actually deplete more heavily now because I'm heavier than what I was initially. My ki is depleting like crazy now. My ki is actually depleting like crazy now. I'm not pretty sure of something. When you transform, it shows charge attack option. So what's better to deal more damage, charge attack or just using martial arts while transformed? No, see, that has, when you transform, it shows charge attack option. So what's better to deal, more damage, charge attack or just using martial arts while transformed? Silver, I'm not sure that I have understood that question well. What is this first of all tell me, what is this transformation thing you are actually referring to? Is it this transformation or is it transformation to that living artifact thing which you press the triangle and the circle together? Are you talking about that living artifact transformation or you're talking about this particular transformation? Tell me this thing, then I'll be able to answer. When transform, it shows charge attack option. When I transform, I'm not sure where does it show charge attack option. By my weight has increased, I need to living artifact. Okay, so you're saying that when you transform into living artifact, it shows charge attack option. So what's better to deal more damage, charge attack or just using martial attacks while transformed?
Now tell me one more thing. The charge attack which you are which you are saying, is this charge attack the one which is being shown right here? Matlab right, those on those two circles. Are you talking about that guardian ability? That charge attack? See, when you transform, the only thing is you remain, the whole action combat remains the same. It's just that you start giving dealing insane amount of damage to the boss. That's the only thing. So, yeah, either you can go for a heavy attack or a lighter attack or a guardian scale ability. So, you can do anything which you want. Also, that guardian ability, that charge attack which you're saying, that won't keep on showing every time. You need to build up that after keeping on the attack going on while you are facing the boss or any particular enemy. So it's entirely up to you. The only thing, the whole action pattern remains the same. The only thing which changes is that you start dealing around 10x 20x times damage to the enemy. That's the only difference which is there while being in the living artifact form. I'll try this once more because I believe I've started to utilize quite a larger amount of key now. Bro, I was doing so fine with that initial. See, I'm so out of key. I'm running out of key like crazy. Bad. Bad. What was that? Arey, bad yaar, bad, so bad. I need to cut down on the weights of my armor. Need to cut down on that. The axe is good, the damages are there, but I need to cut down on the weight. It's 81, right? $78 seems fine. Moon charm helmet. Okay. 154, right? I'm at 53.6, can't go below than that, and I'm at 134. I don't know what happened right there. Hey, why did I drop that? That's cool.
I'm at 81. $117 seems nice to me. One important thing to keep in mind when you use heavy weapons like axe, it's consume more ki, like you said, that these are defensive options. Melee options are katana. I agree, Silver, I agree. But it's just that I have this habit of being pretty aggressive. So it has been working out. Since it has been working out, although it might have been taking quite a number of tries against the bosses, but yeah, you have to play defensive. But it's just that sometimes it's like I see an opening and I feel that I will be able to spam few attacks and get the boss run out of ki, but sometimes it might work, sometimes it won't. It happens, but I understand. I got your point, bro. I got your point. These weapons are pretty heavy, and that's why they actually consume quite a lot of ki. That's one thing for sure. I'm utilizing it. We'll see, but I believe I'll be completing the game entirely around the axe. I believe now. Initially it was the Odachi, but this particular combo is so devastating. I am on 1 HP now. Man, I saw that grab attack animation, but still I already started going for that. But it's actually a pretty fun boss. I know he will be killed very soon, but the soon is what level? For sure. I'll show you the level, bro. I'll show you the level. Even I don't know what level I am. I'm on level 60, bro. This is what we have been grinding. Basically, we have been trying to complete. If you'll see, why am I? If that level is high, I'm not sure what might be the reason, because I started from this particular region, and I tried to complete each and everything. Went to this place, tried to complete almost each and everything. This we cannot complete because we don't have the right spirit vein. Then I made my way towards this area. As you can see that I have tried to complete all the possible things which are there. Although these 2 Kodamas are still there, some Crucible. During the later part of the game, I guess recently only, or maybe even today only, this area was there. I fought a boss right in this particular place. So no, actually I never went back to Blood Edge Demon, honestly. I want to go back, but I don't remember honestly where that Blood Edge Demon is. Or maybe I have actually forgotten to go back to that place where that Blood Edge Demon spawned. I believe I also might need to cut down on that heavy axe which I have, because it's taking quite a lot of stamina. Man, what a way to start. Couldn't roll timely. Such a bad run this is. This is actually a pretty bad run, honestly. Not kidding. This is actually a very bad run. Bad.
I missed it. Ah, got it. Now I'll see if I can transform. No, I'll answer your question. Like, see, I'm doing the same thing. Nothing new. See, I'm even taking damage like the way. It's not showing that charge attack option available. And even I was able to, I was so bad during this stage. See? It's worth to try to defeat Blood Edge Demon since it's very good summon. It's very good summon, deals medium damage and fire damage. Acha, okay. That is the case. I might try that, bro. I might try that. Let me switch this weapon. Do you actually remember where that particular blood edge demon is? Because I remember there was a notification saying that the blood edge demon keeps on spawning on in random locations. I remember he was there at a during the very initial stage only he was there. Where was he? He was in some forest areas and stuff, if I remember it right. Heavyweight axe. This axe is actually, maybe I believe it's taking quite a lot of, but I'm not sure whether there is any difference. Heavyweight axe. The name is only heavyweight axe. Big axe. 782. The following on the list of low stance, do you wish to proceed? Pata, no idea. I have no idea how to use these crucible weapons. These are actually pretty strong. Equipping the following on the list while this weapon is being used. I need to learn about this as well, that how this thing functions. These crucible weapons. For me, it spawned near that demon bull miniboss if you have faced her before. Demon bull miniboss. No, that wasn't the case for me, Silver. For me, it spawned in some forest area, and actually I don't remember it. That whether it's the same paralyzed enemy. Or I'll keep on using this only. Let's see. Who knows? But you're saying it's a good thing that he can be utilized as a summon, and it will be a good. Bad. This is turning out to be slightly more challenging than what I had thought initially. What should I do? What can I do? One question which I have in my mind, that whether I should, give me a second. Let me try this once, then I'll check this thing out. I tend to overuse this particular combo. I'm running out of ki when I'm utilizing this axe, and that thing wasn't happening
when I was using my initial jackhammer. I'm running out of ki. That's the most. Bad, yeah, bad. My guy is getting tired because of this heavy axe. Arey nahi, dude, I was expecting a different attack. Bad. Okay. Still safe. Not safe anymore. Ah, bad. One offensive trick. If enemy is staggered, you should activate living artifact transform. And if you didn't notice on screen when you transform, it showed button inputs to end transform on will. Give me. Maybe I'm not aware what you're saying. One offensive trick. If enemy is staggered, you should activate living artifact transform. And if you didn't notice on screen when you transformed, it showed button inputs to end transform. No, this thing I know, that if you transform, you can. If the enemy is staggered, acha, that is the case or what? If the enemy is staggered, then we can utilize it, that living artifact, even though I don't have enough gauge charge for it. Maybe that might be the case, I'm not sure. Let's see, let's try utilizing this. The point is, there are so many things in this game, no Silver, that, and if I had played Nioh 1 or 2 before, then I wouldn't have. It also showed charge attack buttons and what I talked about. Acha, I'll see this time. I'll see this time. Missed it, yeah, missed it. Ah, bah, cool. Still, I'm safe. I thought that I'll. Ah, nice. He's staggered, right? See, that living artifact cannot be done, bro. He's staggered. Ah, bad. Cool.
Bad. Bad. Arey, dude. I was doing it. Was a good run. It was a good run. Things were under control. And I was out of key. I was out of key at that time. These guys are not doing that much damage. Should I change my summon to someone else? Bad. Such a bad way to start. This particular combo, the day I'll figure out this thing, this particular boss will become so easy. Now this combo is extended combo and I'll die. I know. There is only this one particular combo which is extended, and I know that combo is coming, but I tend to make that mistake each and every time. That I keep on continuing my attack, and that is the reason because of which I'm taking that much damage. There is not enough area to actually keep the dodge on, and also same is true for the stamina. Dodged early. Bhai, that was a close. This combo right here. This combo right here. That is the most difficult part of this boss fight. It has been quite a number of attempts, honestly. But that is one thing for sure, that will get him down. I know it's only the point that our luck is not with us as of now. The timing, the muscle memory needs to be right. I was right when I was reading about Takeda Shinjin. I got him on the first attempt. The first phase in his human form, we got him pretty easy. But in this yokai form, he's giving us this much trouble. Okay, there are bad attempt, bad run. This is a bad run.
I know that this attack is coming, but still. See. This combo every time. Arey, dude. This was a good run. Everything was going well. Same thing needs to be repeated for the third time. That's the only thing. And that combo comes out of nowhere. Should I change my ability? Give me a second. That combo comes out of nowhere and I have nothing against it. Elixir drop rate, medicine efficacy, can't increase, spirit force bonus, increase damage dealt. This is at its maximum. Okay. This is the only thing which can be increased as of now. Also, do we have any title? Damage taken. When your key is reduced to 0. Elemental attack damage. Am I doing any elemental attack damage? Let's increase this. There is no point. These magical items conjure forth Magatsu warrior to attack your foes. What are Magatsu warriors? Acha, you require that Magatsu warrior soul core. Not sure whether this will actually be of any utilization or not, but still, nevertheless, we're going back. Bad start, honestly. See, this combo is pretty straightforward, but still I am having so much trouble against this combo.
Ah, bad. Okay, where I am, what's happening, I have no clue. I guess I'll try this once more and then I'll go back to trying to beat Blood Edge Demon, because Silver has told me that it is actually a good summon. He can be killed, but it's just that we are not able to time well. Everything is going. There are basically three chunks of his health. Two we are able to manage, but the third one is something which we get. I run out of stamina while trying to parry him, while trying to parry all his. That's the biggest problem, honestly. I believe I should not parry all his attacks. How I took that damage? Bad. Missed it. I wasn't supposed to utilize that. See, these are the basic mistakes which I'm doing, and then this combo comes out. Oh, how come I got saved? After grabbing. Oh, bad. Although I don't have health, still will fight. I just wished I had health. I would have got him this time. Oh, is he dead? Have I got him? Have I got him, guys?
Yes! Man, it was so much fun. It was such a fun fight. It was such a beautiful fight, man. It feels so good to actually execute this and to get this done with. I thought that this will take another stream, but I knew it was a matter of time, but still I wanted to get him down on this particular stream. Only never wanted to go back to Blood Edge Demon. Chalo, it was a nice boss. Loved it. Beautiful boss fight, honestly. It took us quite a number of attempts, honestly, 20 odd attempts, I believe, but still, the boss fight was so good that I don't regret those attempts. Oh, we even got a new Guardian Angel. Nice. Not listening. We got a new Guardian Spirit, basically, not a Guardian Angel. Nice. 信玄殿は大義のために全てを捧げたのですね。 Almost on 1 HP. We only had one elixir left, one healing elixir left. But we got him. Lord Takeda Shinjin has been defeated. We defeated him twice on today's stream. 2 bosses. Although he was the same guy, but one in his human form and the other in his yokai form. Now what? Let's see, do we have any new weapon? Achha, we have a sword basically. Hey, no issues, Silver. You can any time go back and watch the boss fight. It's already there. But yeah, the boss fight was beautiful, bro. No issues. You can scroll back and anytime can watch the boss fight. Because I'll be closing the stream. It has been a good run. We defeated 2 bosses today. We defeated Takeda Shinjin and we defeated him twice actually. And also, let me do one thing. At least I can go back and see whether... But I'm not sure how to actually find the Blood Edge Demon. Where was that Blood Edge Demon? I would love to go back and... But I believe there is no other way of proceeding. I'll have to follow this NPC only. Navatora. Let's see if we can find the Blood Edge Demon. Am I going back to the Eternal Rift? Hold then while you're transformed and see your weapon make charge attack. Okay, that might be the case. Silver. I am not aware. That might be the case, bro. The next time I'll be utilizing the charge attack, the transformation, the living artifact, then I'll surely check. Oh, I get it. We might have gone to another region. Now this will actually open a new map for us. Lord Takechiyo has actually moved to another region. And now there will be a newer map, newer areas to explore. I'm sure there will be newer enemies as well. There he is. Oh, someone is curious.
I need to see how to find the Blood Edge Demon again. Now what the hell? Bro, I'm pretty sure that this will be one of the main bosses. I'm pretty sure. That's her Guardian Spirit. And this guy definitely looks like... This is a jacked guy and he looks like Heihachi. A hybrid of Heihachi and Gunjack. Or maybe even you can add some Deviljian features given the fact that he is flying. He has a set of wings. Right, so we are in a new area now. Let's check. Right. When using L1 R1 travel through time, you can fast travel to any shrines you have visited in any era and within the... Achha, this was the area. Warring states. And this is Heian. Okay, there is a crucible. Now what's that? This is a newer kind of a symbol. This is a crucible. How many regions are there in this area? We are starting out from where? Okay, this is a big area. We are starting out from this place. And this is the first region. Third region, fourth, fifth, sixth, seventh. I guess this is the last region, maybe, because... maybe not. There might be one other region as well. This is kind of Act 2 of the game. And there will be an Act 3 for sure, I believe. Mount Kurama. Shrine is there. Let's first level up. I'm increasing these just for the fact there are certain weapons which cannot be used because they actually require a certain level of a specific stats upgrade. So that is why we are utilizing it. How come these weapons are... The enemies look like still the same. The only thing is that they have taken some... There's a new visitor in the Eternal Rift. Okay. How will I be able to find the Blood Edge Demon? How? Will there be a... I found that Blood Edge Demon somewhere near a forest area, and actually I don't remember where that area was. Also, sometimes when you visit a specific shrine, it says that a blood edge demon has appeared. So who knows, that actually may be something of relevance. What are these blue? Okay, these might be lamps. Who knows? Why? What was the point of bringing me to this place if this door doesn't open from this side? What was the whole point? Okay, there is a ladder right there, and there is a hot spring basically. Sure, Silver, if you can please. I'll go back to that exact area and then I'll check whether that Blood Edge Demon is there or not. Although I'm pretty sure that it's actually a very random thing, that Blood Edge Demon will spawn randomly for places. If you can, and if it doesn't take quite a lot of time and effort of yours, please, if you can help me with that.
Or it would be better, Silver, if you can Google it, that how to actually find the location of Blood Edge Demon. If you can Google it, it would be actually be much better, because then it will actually answer all the questions. And one thing more which I need to do is to figure out how the blacksmith works, because I haven't been using the blacksmith for even a single thing, because I don't know how he works, how she works, or whatsoever is the case. Okay, there is a werewolf right there. Hey man, these areas are actually pretty much confusing. Where do I need to actually go? There is a shrine for sure. I believe that shrine is the one which we... No, that is actually... Oh, give me a second. That is actually a new shrine, I believe. Or maybe not. Let's fight that werewolf if we can. How to spawn Blood Edge Demon? Ha, Silver, tell me. What was the point entirely of utilizing this spirit vein? This camera angle. Bad. This camera angle is so bad. Okay. Excellent. Those red rays, what shows randomly? Have you seen them? These revenants. These revenants here. This one. Fight the revenant. I believe this is that red grave which you are actually talking about. These are the revenants. I have fought a few of them. Fought a few of these revenants.
Yeah, go ahead. What needs to be done? Is there something which needs to be done? Can we make the blood edge demon spawn at this point also? At this particular grave as well? Although that would actually be a very bad idea. Matlab, getting to spawn him on at such a constricted place will actually be sheer death. There is this one loot item which I'm not able to reach, honestly. Oh, is that a shrine there? That looks like a shrine, or is it? It's actually a shrine, but have we not already? No, I don't think so. We have, or have we? Yes, we have already unlocked it. Honestly, this was the place from where I actually came from. I'm not even sure. Right, and now when you fight those blood grave enemies on specific amount, blood edge demon shows up with purple grave while also some red graves around him. So basically we need to fight quite a number of these revenants, मतलब a specific number of revenants, then only that blood edge demon will spawn. Is that the case? I thought that the blood edge demon would randomly spawn, because I was when it spawned for me for the first time, it said that only, that it will keep on spawning randomly. Maybe. Or am I supposed to fight that guy, that revenant guy? Who knows, maybe. Let's go ahead and see whether we can fight him or not. There he is. What level he is? Oh, he's on level 53. Oh man. A level 53 shinobi. Pretty weak shinobi he was. Nevertheless, I'll find that thing out in my next stream, and I'll fight the blood edge demon on the next stream, and if that is the case, no issues, I'll fight him. Right, so in that case, we have, this is actually a big area, a newer area, and I'm not sure where do I need to go. I need to make my way towards that area. Okay. Should I at least complete this much portion, and then let's reach this shrine, and then I'll call it off a stream for today. Okay, I need to reach higher grounds. Can't make my way up through this place. Let's break this. At least it will act as a shortcut. What's up with you, bro? What's up with you? Kazewara Kagetoki.
Amkaze warakagitoki minamoto no yorotomo. Man, these words are so. How it spawned for me. Every time I saw blood rays, I just defeated them all, and then it just randomly showed up while I was. Okay. In that case, I'll also do the same. I have been fighting few of those revenants, but not all of them. But if that is the only way in which he can be spawned again, then we'll try. The toughest part for me is aiming with a controller. That's the toughest thing for me. I've always been a keyboard mouse player, so aiming with a controller is the toughest job. And that is why I don't play shooting games or games like these. Hey dude, I was planning to fight that revenant and this guy showed up. This guy had red eyes and he wasn't tough, but he got me at the wrong time. Not interested. There, I believe that is my shortcut. If not, yes, that is my shortcut actually. I just hope I'm not being followed by that werewolf. Need to touch my grave. Where is he sitting at? That crow, that red-eyed crow. Where is he sitting at? From where does he jump since one? Maybe he's sitting right at the top of this roof shed. Who knows? Let me see. Oh, he's sitting right behind that, and that is the reason because of which he cannot be seen. Is there a way? No, I don't think so. Let's fight him. Let's fight him nicely this time. Oh no, he's not sitting there. He was sitting right there. Oh, every time this grab animation is so... He won't even stop for an attack. And when it's his turn to attack, man, he's not that easy. I was taking him for an easy guy. He's like he attacks and he keeps on dodging. If I had a sword in my hand, then this would have been easy. But with a hammer, it's actually slightly tough. Not that tough, but pretty much manageable, pretty much doable. Where is he sitting at? I can't see him from where. Where is my... Okay, there is a shrine as well, but I'm not worried about the shrine as of now. How potent.
Ah, nice. This time he got burst counter. He was a nice guy. Nice little guy. I hope there are not many like him roaming around like that. I'm pretty sure it has to do something with what's called glory in this game. When you defeat those blade, it shows amount of glory you get from defeating them. Maybe you might be correct there, but bro, it's just that I still need to figure out, because that I haven't been chasing the blood edge demon, but because you're saying, I'll fight these red guys for sure now. Okay. Oh, this is a nice little fellow. He has quite a number. Okay, he's dead. Obtained 42 glory. Okay, right. You're right. You are actually pretty right. Pretty much right. You get glory, but I have also seen these blood edge. A blood edge demon has appeared. This particular notification quite a lot, but I couldn't ever come across any other blood edge demon, bro. Honestly, don't know why. What area is this? Whatsoever area is this? Okay. Now what's that? Pipe. It's an umbrella giving me so much trouble. The kind of enemies in this area have actually even this guy makes me dizzy. Now what is this thing? Okay. I'm pretty sure the boss of this region will be actually a very weird looking creature. I'm sure this won't open from this side. Just like all the other doors of a Souls like. Okay, there is a strong character, a dark realm energy right there. Alright. It's a mushroom. But this mushroom itself is on mushrooms. I tell you shrine name where it spawned for me, and if it isn't there, then we can assume it spawns on random location. Sure. Tell me this. Tell me the shrine. Then I'll go back to that shrine and I'll see that whether it's there or not. Oh, there's a. Okay, what's there? There he is. There he is. I'm not sure what you're supposed to do. Am I supposed to bow? You're supposed to do certain gestures. You're supposed to do gestures. This will open, right?
Hey dude, initially I thought that my biggest nemesis were those hornets, and now there is an update. These creatures are actually the most irritating one. What's this guy? Right, so okay, there is a strong enemy. Let's see who is it. Arey, this one. Oh no. Back up, back up, back up, back up, bro. Will this door open now? Right, so basically this will now act as a shrine shortcut, right? Or is this a new shrine? Give me a second. Okay, this was that same old shrine which we initially unlocked, right? This area we have already cleared, so going back towards this area now. This was the one which we just opened. Okay, now there's a big guy. Don't know what kind of attacks he has. He was a big guy, but of no use. This area we have already cleared. Now let's open this door. Hoping to see a newer shrine Sunacha. That big creature right there. But before that, let's fight this revenant. Oh, nice. Now this creature right there, fighting him in this particular manner is actually pretty tough, because it will actually do quite a lot of damage. So what should I do? Let's take care of these puny guys first. Now this guy right there. Also, let's check that. Hope that there are no further enemies. But what's that? Hey dude, let me fight her as a shinobi if I can.
Pretty sure she'll be weak towards the shinobi. Let me drop down on him because he is actually pretty much if he turns back, no, then it will actually be very tough for us. Fool. She's 今日の都を騒がすあやたしめくそせめて道連れにしてやる Silver, are you still there, bro? In case if you're having difficulty, bro, we can do it on the next stream. Because I'm also about to close the stream, bro. We can check that, or even I might Google it and I'll figure out how to actually. Hey, there is a cutscene. Bro, I never wanted another boss fight. Shrine named Forest of Souls. Okay, I'll go back to that shrine. Let's see what is in this cutscene. Is this a boss fight? Seems like a boss fight. This might be that guy. That Gunjack Heihachi guy. He has the power of winds. We need to fight him. I had so many souls. Ah, he grabbed me. The great Tengu. Bro, I should have activated that shrine first. It would have been so good, right? I should have activated that shrine first. How come that guy is still alive? Nevertheless, I believe this is a shortcut. How come these characters are still alive? I don't want to fight them. Don't want to. No, this is not the right way. I've forgotten. Okay, I need to go towards that area. How will I be able to? There was a ladder somewhere, right?
but ladder is towards the top. No, this wasn't the way. I opened this door. Okay, this is that place, right? Let's try fighting him once more. There is a timing to it. He's a one-legged chicken, one-legged crow. What? Silver, do you have any idea how come? How will you be? Will you be? Is there any element utilizing which you can recover your lost souls? Is there any element in our inventory? Whetstone, arrowhead. Tempering amount of it I acquire. Poisonous blade tincture, red spider lily. Nahi sake. Tiger running amulet. Sacred ash. There has to be one particular element, inventory item utilizing which you can actually. A special candle that summons guardian spirits and amrita from graves. From that. That summons guardian spirits and amrita from graves. Maybe this is the thing. Returns for a period of time. Summoner's candle summons guardian spirits and amrita from graves. Should I try utilizing it? Yes, this is actually that item. I got that. Cool. Got that. Summoner's candle. This is known as the summoner's candle. Okay, now we need to make our way towards shrine name Forest of Souls. Give me a second. No. Forest of Souls. Where was that shrine? Not in this region. So, can you tell me the region name as well, Silver, if you remember? Oh, there it is. There it is. Forest of Souls. This boss is actually a pretty nice boss, and we will be taking care of him for sure. Hey, I believe that the blood edge demon spawned at this particular near this particular shrine only. I also feel the area was somewhat similar, if I remember it right. He was somewhere towards this area. No, the blood edge demon was in this place only, somewhere near this place only.
The area was pretty much the same which you have mentioned. This was the actual area. This was the place where that blood edge demon summoned for me, but can't find him as of now. Can I see it on the map anywhere? There was a grave which was actually surrounded by quite a number of swords. There was a grave, a purple grave, which was actually surrounded by a number of swords. And yeah, that is what I'm actually trying to look for. That blood edge demon. The area was actually the same. This particular area was the one. Or it might be the case that the blood edge demon might have followed us to the places which we have actually moved, and it can be the case because that would actually make sense, right? Whenever you get those notifications that a blood edge demon has occurred, has spawned basically, so you need to look for that demon in that particular area only. This is what I feel, but I'm not sure. Can't see a purple grave honestly. Nevertheless, this was a crucible which we cleared. No, it wasn't in this area. There's also a mini boss if you haven't faced him. What is that mini boss? Near this shrine. Does that look like a big squirrel, a black squirrel kind of a with 4 swords? Is that what was it? What was its name? Kaime Tama somewhat. If that is the case, then I have faced him. Or if it is a different boss, then you can surely tell me his location. I'll try to see what kind of a boss it actually is. Dude, that blood edge demon, where are you, blood edge demon? Not sure. Nevertheless, I'll try to find that blood edge demon tomorrow, bro. Tomorrow in our stream, we'll try to find him. I'll Google it. I'll see where to actually find him, right? It has been a long run. Today we have been streaming for quite a while now. So, on that note, we'll call off the stream for today, guys. Thank you so much for joining in. Thank you so much for having a conversation with us, Silver. Hope you also have this much amount of fun, or even maybe more than this, while playing Nioh 3, right? And this particular boss which you are mentioning, I'll read about it, and also that blood edge demon, I'll read about it, and I'll join with that on the stream tomorrow, right? So thank you so much everyone. We'll see you tomorrow. This is GoDMetal signing off. Bye bye. Have a good night. You guys take care. When the name Mizuki, I have fought Mizuki. I remember. I have fought Mizuki. Yes. I remember the name as well, Mizuki. Right, so we'll see you tomorrow, Silver. You take care till then, right? So this is Mr. Takayoshi saying thank you for joining in. This is GoDMetal signing off. Bye bye. Have a good night. See you tomorrow, guys. Bye bye.